Sir, sir, this attire is appropriate as the shirt is this shirt is made from the cotton and which is good for the summers. What about tie? Sir, can you pardon the question, please? There was a call. What about the tie? Is it also a part of Indian attire? No, sir, don't know about. Sorry. Fine. That's all right. We'll move on. Okay, tell us about your family background a little bit. Sir, Your Sir- family background. family. Sir, my family is a middle class family, and my father is the sole earner in the family. I have a family of 5 siblings. There are three elder sisters, and there is one younger brother to me. All right. What is the occupation of your father? Sir, my father is a salesman, and he has a private business too. Which business does he carry out? Sir, he is indulged in the property trading business. All right. So you must have, I mean, obviously, since your father is into that thing, then which particular act statute is very closely associated with the occupation of your father? Sir, as far my knowledge, RERA is closely associated with it. Do you also think that Transfer of Properties Act is also Yes, sir. applicable? Transfer of property. Okay. Have you heard about transfer of property even without transferring the title? Is it possible in law? Sir, on lease. Is that does that amount to transfer, or it only transfers the user rights? Does it also transfer the user rights? Is it possible to transfer a property merely by handing over possession? Sir, it is possible when the cost of the property is below 100 rupees. All right. Tell me about this particular interesting position of law, which is called peaceful possession for up to 12 years. You must have heard a lot of controversy has rolled around it. What is it? Please describe it for us. If a person is enjoying a peaceful possession, that means it's enjoying possession over a land and no other person has claimed over that for a period of 20 years. Then it is come under the adverse possession and he has a right evolved on that land. And in the case of government land, then the time period is the 30 years. All right. How do you see bar bench relationship? What are the proactive steps that you would like to take to improve that relationship? Sir, bar and bench both should be there should be a harmonious relationship between the two. There shouldn't be conflict in between them because both are essential for the justice delivery system in our India. Because the bar represents the voice of the people and the bench is deciding the disputes, and if there is a clash between them, then a proper decision cannot be made. All right. Tell me one more thing as a matter of court procedure and substantive law as to whether suppose a particular case is filed by a particular girl and she accuses somebody of physical molestation. However, after the case progresses, then there is an out-of-court settlement of some kind. Imagine this is hypothetical situation. Is it possible for her to withdraw the case? At present, I'm not able to recall, but I would like, sir, it is not possible that because it will be goes against to the public policy because the offense which has done against her will be considered as against the state. That's right. Very well. So, have you heard about free legal assistance? Yes, sir. Free legal aid. In which cases is it given? Sir, it is given under the Husainara Khatun versus Union of India. Okay, I'm asking
in which type of cases this free legal assistance is available, Okay, or sir. are there some exceptions to it? Sir, free legal assistance is given in the cases which are not punishable for imprisonment for life or so death punishment. Generally, it is not given the case which are heinous in nature. Is it true? People often say this. Social media also talks about it. Is it true then that if an advocate is supposed to be present before a court and he is traveling to the court, then he cannot be detained by the police? Is it true? Yes, sir. Is it also true that if a governor's, honorable governor's vehicle that crashes into somebody, then no charge can be brought against the governor? Does the governor have any kind of immunity from prosecution? Sir, under Article 361, there is a privilege to the governor and the president. But sir, I do not know whether this situation come under that. All Sorry, right, sir. that's fine. Tell us three most interesting activities other than the academics and curricular activities which interest you. What would be those three areas? Yes, sir. Sir, my hobby is to play chess, and sir, I am more interested in listening music and playing cricket too. Listening to music and playing cricket. Which kind of music do you like? Sir, I like instrumental music most. Or any particular favorite instrument? Sir, my particular favorite instrument is piano. Piano. All right. Okay. You play also, or you are No, just a sir. you No, are a sir. listener? Voice. All right. Okay. Fine. Have you heard about this thing that harmonium as an instrument was banned from all India radio for a long, long time? Have you heard about it? So I have heard, but not able to recall that right now. Oh, absolutely fine. Absolutely fine. Any, tell me a particular section or a particular area in law in your syllabus that you like the most. Sir, I like all the subjects equally, but if I want to choose one subject, then I would choose the constitution. Okay, very well, very well. Then I will hand it over from here to Honorable Ojha sir. So, Okay, sir. so that questions on constitution can be asked. Yes, Sir, sir. Yeah, Himanshu. Right Good evening, now, sir. there is a lot of debate on the Rahul Gandhi. Yes, sir. What is the issue with the Rahul Gandhi? Sir, the debate is over the decision given by the court that because the court hasn't mentioned the reason why it has given the maximum punishment in the case of defamation. In the defamation, there is a punishment of, sir, 2 years, which is maximum given in that. How a MP can be debarred from the Lok Sabha? Sir, sir, there are various grounds which are written under Article 102, and sir, in which it is written that if a MP has violated any condition which is comes under the anti-defection law, or then he shall be removed, or he is barred. He loses his citizenship, then he will be barred. And there are several others, sir, but not able to recall, sir, right now. Under which provision the Rahul Gandhi has been debarred? Sir, Rahul Gandhi has been debarred because the punishment, if any MP or legislative member is punished with an imprisonment of 2 years or more, then he will be debarred from the office. What is the language in the Act? What is the language in the bare Act, in the Constitution? Sorry, sir, but not able to recall, sir, right now. There is one issue going on with respect to the voice vote in the parliament. What is the voice vote in the parliament? There's a lot of debate going on since last 1 year that there is a voice vote in the parliament. There is now the division of vote in the parliament. What is this? Sir, I'm
Sorry, sir, I'm unaware about that. You got my question? Yes, sir. Yes, sir. What is it? You know this? Sir, I don't know about that, sir. You haven't Sorry, sir. heard it? Hmm? Sir, I have read once, but not able to record it properly. Okay. What is the procedure to pass a bill in the parliament? Sir, for passing a bill in the parliament, then it must be passed by both the houses of the parliament, and then after it will get assent of the president under Article 111. Then it will become a act. What is a private member bill? Right now there are lot of issues in the newspaper. What is private member bill? Private member bill. The private member bill is passed by any private person who is not a person, he is not a member of the party. Passed by a private person. Again, you see your framing of the sentence. Private bill is passed by the private member of party. What does it mean? Sorry, sir, not able to recall, sir. You have no idea. No, sir. What is appropriation bill? The appropriation bill is made to draw funds from the Consolidated Fund of India. Are you sure? Sir, right now I am whatever recall that is. There is vote of confidence going on in the parliament. You must have heard it. Sir, pardon, please. There is a no confidence motion going in the parliament. You must have heard it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is this? What is this? Sir, no confidence motion is made against any member. So, if no confidence motion is passed, then the member loses his membership in the house. Again, you try to see it. Your answer is not correct. No confidence motion is against a member or against the government. Sir, against the government. Then why are you saying that a member will lose his membership? Sorry, sir. Is there any mention of no confidence motion in the constitution? Sir, not able to recall the right provision. Sorry, sir. What is collective responsibility? Sir, collective responsibility is given under Article 74, where it is written that the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha, House of the People. 74 or 75? So there is confusion between 74 and 75. The no confidence motion is emerging from the collective responsibility concept. Okay, sir. I'm asking you. Yes, sir, it is to be related because if I don't know the exactly about that. Jaswalji? Sir. हिमांशु Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ का भी कोई प्रोविजन है? कौन सा सर? मार्शल लॉ. हाँ सर, ये 33 आर्टिकल 33. Himanshu, you speak. 34. Himanshu, you speak only in English. Okay, sir. Sir, Article 30. Your medium is English, sir? Yes, sir. Yeah, you speak. हिमांशु, क्या आज की डेट में मार्शल लॉ इंपोज किया जा सकता है? Sir, Armed Force Special Power Act is imposed. Under the Constitution of India, can a martial law be imposed? Sir, don't remember it right now. Sorry, sir. Okay. क्या
ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका राइट टू जो पर्सनल लिबर्टी है अंडर 21 वो Yes, sir. किसी तरह से उसको कर्टेल किया जा सकता है? No, sir. Under Article 359, it is written that except Article 20 and 21, enforcement of other rights, other fundamental rights can be stopped. अच्छा हिमांशु, अभी सर से आप बता रहे थे कि ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक होता है, पब्लिक पॉलिसी होता है, तो इसलिए उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। Yes, sir. तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ऑफेंसेस को विड्रॉ किया जा सके? Sir, compounding of offenses, section 320 is dealing with compounding of offenses. और सर विड्रॉल का सर प्रोविजन है सीआरपीसी में, जहां पे लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर शायद परमिशन से कर सकते। वेयर इज प्रोविजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन? Sir, it is given under article, sir, right now do not able to recall the right provision, but sir 350, it is around 350. Under CRPC, Yes, sir. withdrawal from prosecution, is there any provision in CRPC? Sir, can you please repeat the question again? Sir, your voice fluctuates. फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद उसको विड्रॉ किया जा सकता है? Yes, sir. प्रोविजन कहाँ है? Sir, as far as I remember, 353. 353 CRPC? Yes, sir. 321 तो नहीं है? Yes, sir. 321? Yes, sir, it may be. I am not able to recall the right provision, sir. अच्छा, आप देखते हैं कि बैंक साहब जो मिनिस्टर्स हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का भी प्रोविजन है, तो Yes, क्या sir. कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड यूज कहीं है? Yes, sir. In the emergency provision, it is written that union cabinet, sir. But in the case of national emergency. और उसके अलावा और कहीं नहीं है? Sir, not able to recall other provision at this time. ओके। हिमांशु, Yes, sir. आप क्या प्रैक्टिस में हैं? No, sir. Legal practice? I'm into the academics. I have done my LLM, sir, right now. कब पास आउट हैं? Sir, I have done my LLM in the year 2023. तो आप टीचर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? Sir, my sole purpose in my life is to become a judicial officer. I have done my LLM to enhance my knowledge. और ये आपका पर्पज फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है? Sir, sir, I will do my best to get such. And since I am firm determined, I will achieve this goal one day. So, sir, there is no option B for me. You are using sole purpose. Yes, sir. तो हिमांशु, आप कोर्ट में नहीं गए हैं? Sir, I have visited court, but only a few times, sir. Few times. क्या देखा कुछ कोर्ट का, कैसा आपको लगता है एटमॉस्फेयर? वो एडवोकेट ज्यादा बेटर पोजीशन में है या जुडिशियल ऑफिसर? Sir, since I have went to the district court, I have seen that the judicial officer in the better position because he is in the position to decide, and advocates are there to plead and put their case. Judicial officer is to apply his judicious mind and to resolve the dispute, sir. So, sir, position is always, in my opinion, is better. You mean कि एडवोकेट का कोई खास रोल नहीं है, डिसीजन तो जैसा आपको देना है? नहीं,
sir, advocate has to put the right facts in front of the court. Then after the court can decide on such. अच्छा, ये बताइए कि जुडिशियल ऑफिसर जो अपने जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हैं, Yes, उसके sir. बाद भी कोई रेमेडी है कि उसमें कुछ अल्टर किया जा सके, अमेंड किया जा सके, कोई एरर है तो? मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेदर जजमेंट कैन बी अल्टर और अमेंड? Sir, sir, there can be appeal or revision or review. यानी जिस कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है वो उसमें जरा सा भी चेंज नहीं कर सकता, एक सिंगल वर्ड कामा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकता। At present, I am not aware of that, sir. Sorry, sir. सीआरपीसी में ऐसा कुछ प्रोविजन है, आप रिकॉल करें। 362 सीआरपीसी कुछ आपको ध्यान आ रहा है? Sir. नहीं आ रहा। आपको सिविल कोड में अप्लीकेबल प्रोविजन याद आ रहा है? Sir, section 99. सेक्शन की बात नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सिविल कोड भी अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता? Sir, यदि sorry, sir, रिव्यू not कर सकता है तो नहीं, Yes, sir. ये रिव्यू का प्रोविजन है इसमें? Yes, sir. In the CPC, there is a review. Yes, sir. तो रिव्यू का पर्पस क्या है? रिव्यू का पर्पस क्या है? Yes, sir. The court which has passed the judgment is empowered to review it. मीनिंग दे रहा है कि वो अपनी ऑर्डर जो पास कर चुका है उसको चेंज भी कर सकता है ना? Yes, sir. Under section sir 114. यानी बिना अपील और रिवीजन के भी अपने ऑर्डर चेंज किए जा सकते हैं। Yes, sir. ये कहाँ है ये पावर आपको, ये कहाँ पे मिलता है? Sir, under Civil Procedure Code, it is given under section 114 and order 47. ओके, तो जो सिविल कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दिया गया है, क्या उसमें चेंज नहीं कर सकता है? Sir, the inherent power are given under 151 of CPC. नहीं, And मैं sir- आपसे सेक्शन नहीं पूछ Yes, रहा हूं। sir. मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपने ऑर्डर को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते? Sir, sorry, sir, but do not know the exact answer. क्या आपको लगता है इनहेरेंट पावर में ये सारी चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है? Yes, sir. Inherent power are those power, मतलब सर जो एक तरह से रेसिड्यूरी पावर है और जहाँ पे डायरेक्ट प्रोविजन के तहत नहीं कर सकते, बट फॉर अगर कोर्ट को लगता है कि फॉर जस्टिस वो नेसेसरी है तो सर इनहेरेंट पावर को यूटिलाइज करके वो कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या इनहेरेंट पावर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी मिला हुआ है? हिमांशु, यस सर। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई इनहेरेंट पावर है? चलिए कोई बात नहीं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के केस में तमाम एसआईटी गठित की है। यस सर। जो कि जो चीजों को इंक्वायर करेंगे, तो ये किस पावर को यूज किया है इन्होंने? कहां से उनको ये पावर डिराइव किया है उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन से। Sir, can you give me a 1 minute? I have to, sir, change the internet. ओके,
The internet has ended, so that's why. 1 minute, sir. No, sir. Sir, am I audible? ओके, मैंने आपसे कुछ, आपका जवाब आंसर क्या है? मैं Sir, क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपको yes, sir. कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस एसआईटी जो है फॉर्म करके मणिपुर के जो इवेंट्स हैं उसमें इंक्वायर करने का ऑर्डर किया है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को है, कहां से ये पावर उन्होंने डिराइव किया है? Sir, I do not know exactly, but if I have to try, then I think it is Article 142, हाँ sir. मिश्रा जी, 142। ओके, 142 क्या है? Sir, 142 article हाँ gives the power to the Supreme Court to do complete justice, नहीं sir. क्लास ले रहे हैं। ओके, कंप्लीट जस्टिस। आ रहे हैं। और ओके, 142 के तहत तो आपने ये गेस किया है कि क्या सकता है, तो यस यू आर राइट। हिमांशु, एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स? Yes, sir. It is, this difference has been decided by Salmon and Winfield. And sir, according to pigeonhole theory of Salmon, there is a set of thoughts. मतलब सर उनकी एक लिस्ट, जो थॉट्स है उनकी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, और सर जो थॉट है वो द वर्ड इज अनडिफाइंड, सर. Undefined. What do you mean by law of tort? The law of tort, the tort is a short term, sir, civil, it is a civil wrong, sir. It is, ये तो काइंड ऑफ टॉर्ट्स आप बता रहे हैं। Yes, sir, law of torts बता रहे हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंफर्म नहीं है आप? ये Sir, I have read that. आप Sir, in that pigeonhole theory, it is written that there is a particular set of the thoughts. If any act fall under that category, then it will be called as a tort. नहीं, ये तो आप ठीक बता रहे हैं, पिजन होल थ्योरी। अच्छा ठीक है, तो लॉ, ये आप टॉर्ट के लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका इंटरेस्ट है? Yes, sir, I have read that. क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड लॉ है? No, sir, it is uncodified law. अनकोडिफाइड है। क्या ऐसा इसको कोडिफाइड करने का कोई एफर्ट हुआ है? Sir, the law of tort is generally dealt by the judicial decisions, and there are also some laws which are made made for enforcing that. Sir, जैसे like motor vehicle act है, then it is based on, sir. What about consumer protection act? Yes, sir, it is also based on law of torts. ओके, आपने कभी एक स्कल थ्योरी सुना है लॉ ऑफ टॉर्ट में? Sir, can you pardon the word, sir? एक अंडे खाते हैं ना, Yes, sir. तो वही एक स्कल थ्योरी। No, sir, haven't read this, sir. Sorry, sir. नहीं सुना है आपने? ओके, अच्छा, विकेरियस लायबिलिटी की थियरी
का बेसिस क्या है? Sir, vicarious liability is based on uh, such respondent superior, and sir, it is also based on a deep pocket theory. There, it is written that sir, a master shall be liable for his act of servant. क्या स्टेट को भी विकेरियस लायबिलिटी के दायरे में लाया जा सकता है? Yes, sir, it can be done, but whenever it is performing a non-sovereign function, sir. नॉन सॉवरेन? Yes, sir. ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं क्या अभी भी एप्लीकेबल है? Don't know, sir, exactly at present time. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. Yes, sir. आपने उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा होगा कि स्टेट जो है सॉवरेन इम्यूनिटी का डिफेंस लेके अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकती. पढ़ा है कभी? Yes, sir, I have read that. केस याद है आपको? मैं हिंट कर रहा हूं, कुछ सम गुप्ता केस है. एक ही गुप्ता वर्सेस एलडीए पढ़ा है कभी? ओके, ठीक है सर. नेक्स्ट ओझा सर. अनुज सर सादर प्रणाम. Good evening, sir. Good evening. And what is the concept of sign tie not fit injuria in a tort? Sir, sign time non-fit injury, and sir, other one, whatever you are. Only one. Sign tie non-fit injuria. Sir, it is based on the knowledge, sir. If a person has knowledge of that act, then it doesn't amount to consent, sir. Means? Means, sir, जैसे Give me an अगर example. yes, sir. Sir, there was a case. I'm not able to recall the name of that case. In that case, sir, there was a worker working at a place, and the load of stones are moving from one place to other over his head. He has knowledge that it has been done. So whenever there is an accident and sir, that stone fall on that person, it has been claimed that since he has knowledge of that, he has consented for such. But sir, it is declared such sanitary non-fit injury is not a defense under the torts. So if a person has knowledge, then it doesn't matter. He has to consent to suffer that thing, sir. Is there any difference between voluntary non-fit injuria? Sir, voluntary non-fit injuria, where a person has voluntarily consent for such. Like, sir, if a person is appearing as an audience in a motorcycle game or play, and if there's some accident happen, then it is presumed that he has consented for such. What are the exceptions of voluntary non-fit injuria in a tort? Voluntary. Sir, where there is a fault, negligence ki sir case. You have already told that the legal or free legal aid can be denied in a case of heinous crime. Yes, sir. Is it possible? Sir, free legal aid is. I don't know. Then what exactly. about in a case of Azmal Kasab? Yes, sir. Section 304 of the CRPC. What is the provision? Sir, under this provision, it is written that if a person I don't know the exact provision right now. For the free legal act in a session trial. Yes, sir. Okay. Is there any provision in a CPC for the free legal aid?
Sir, uh, ordered sir 33 indigent suits, sir. Yes. Rule 9A and Rule 18. And what is the bona vacantia? This terminology used in a constitution. Bona vacantia. Have you heard this? No, sir. Yes, sir. State of the property. Okay. What is the inter vivos transfer? Sir, between the transfer is to be done between the living person, sir. Under which sections of the Transfer of Property Act? Sir, under section 5 of the Transfer of Property Act. 5. Yes, sir. Okay. And what is a fraudulent transfer? Sir, fraudulent transfer is given under section 43 of the Transfer of Property Act. Are you correct? No, sir. No, sir. It is, sir, feeding the grant by stopple. Sir, Yes. 53 of the Transfer of Property Act. What is the provision of the fraudulent transfer? Sir, if a person has fraudulently transferred his property in order to deceive the creditors, then sir, such transfer will be treated as void. Have you heard the doctrine of cui facit per alium facit per se in a tort? Yes, sir. What is this? Sir, at present, I have read it, but sir, at present, I'm not able to recall it Vicarious correctly. liability is based on this principle. Yes, sir. And yeah, yes, sir. There is a two principle. The first, Yes. you have already told, respondent superior and cui Respondent. facit per alium facit per se. In which case, the sovereign and non-sovereign act was Yes, sir. Sir, PNO steam navigation. Yes, sir. PMO steam navigation. And Yes, what sir. is the sovereign act? Sir, sovereign act are those which are performed in order to do sovereign, which are only performed by the sovereign bodies. It cannot be, sir, delegated to the others. And what is the basic characteristics of the sovereignty? Sir, the word sovereignty means, sir. So sovereignty means a person who is independent, superior, and he is independent, and there is no someone other lies to sir, lies above it, sir. I'm just talking about the characteristics of the sovereignty. Sir, In a not able. jurisprudence, Austin has defined there is the characteristics of the sovereignty. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Start analysis. Sir, just one more question, follow-up question. Yes, sir. Tell me, dear, since you have done LLM, and you must have also gone through interpretation of statutes, what is Yes, the sir. difference between the two doctrines, that is, justum generis and nociter asoci? Sir, justum generis means of the same type. मतलब, or sir, second one? Nociter asoci. Don't know. Okay, can you recall any application of a justum generis? Any case or an example? What is the Sir, difference not- between interpretation and construction? Sir, interpretation. Sir, interpretation generally mean to elaborate what is written in the text. Sir, it is kind of three, like literal, or sir, golden and mischief. And sir, the construction is to derive, is to draw a meaning out of the context, or sir, derive meaning from that. Okay, we'll see that later. Now, just the last question from my side.
Since you have mentioned literal, golden, and mischief, just elaborate briefly. Briefly tell us about the difference. Sir, literal meaning just whatever the written, it has to be interpreted as it. And sir, mischief when there is ambiguity, and sir, it is found that कि सर उसमें कोई ambiguity होती है, तब सर उसका ऐसा कंस्ट्रक्शन निकाल. English only, please. Don't break Okay, your sorry. medium. Okay. So under the mischief rule, then when there is it is to be applied when there is an ambiguity in the context. And sir, literal golden rule is that in which we are to interpret as according to the intention of the legislature, sir. Okay, and which of the three is also called purposive interpretation? So Why that final thing? Why that is called mischief? Why it is so called? Why it is called mischief? As far as I know, sir, when there is a ambiguity and where there is application, not provision is not correctly applied on anything, sir. Okay, fine. That's all right. Let us now begin with quick feedback. So Yes, first important thing, which is my impression, my respectful opinion about your overall interview is that you are doing very well. Okay, so do not worry. Your hard work, the hard work that you have put in acquiring knowledge and trying your best to imbibe the meaning of law, the inferential part of law, the practical side of law. That's good. That's good. Your efforts are visible in your demeanor. Number one, which is very important. Okay, you have worked very hard. There's no doubt about it. We are all infallible human beings. We are all fallible. Yes, nobody is infallible. So that is all right. There will be certain questions which you do not know. But overall, I can say that your struggle is visible. You have really worked hard. But what should be the areas of important improvement in you? Number one, you are too quick to open up your answer. Please take a pause. Okay, take a pause. And closely associated with this particular attribute is the second feedback point. You are too quick in the speed. You are very fast. You need not be that fast. No, don't do that. Okay, what is happening? Please let us acknowledge, all of us, our first language is not English, isn't it? So Yes, what happens with people like you and me? We are people from villages. We have risen from villages. And that is why even today, we have trained our mind to think in Hindi and then quickly keep translating in English. That is what happens with all of us, isn't it? That's the reality. Yes, sir. So because our primary medium of learning and instruction and understanding and language has been Hindi. तो वो हिंदी में सोच के उसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट कर. That is what happens. And that is why you should give ample time to your brain to do that processing. Do not, otherwise the first part of the sentence which you have already made in your brain, that will come out very quickly. But when you will have to articulate about it, then you will stammer, you will get occluded somewhere. So the best way out of the situation is that you do not hurry. Take your time in framing the sentence. First 2-3 seconds, frame the sentence, because you'll have to quickly translate. That's what the brain does. And then very gradually you proceed to the next sentence and next sentence. That's it. That will be very helpful. Okay. Point 3, which actually tells your innocence and your what should I say? Your absolutely unblemished character, and that is when you try to recall. I saw you very closely. You were trying to recall, especially in response to Anuj sir's questions. When you were trying to recall her, then it was showing up on your facial expression. Yes. You replay this video, and while judging how you responded to sir's questions, you will find that you are doing like this. See, I'll come closer to the camera and say, जब तुम recall कर रहे थे, then you were still like this. Like this. Okay. Don't stress upon yourself. It's all right. And when at the first instance itself you do not know the answer and it requires recollection, the best way is to very respectfully seek the permission rather than doing this and keeping an awkward silence. Seek, sir, can I have 5-10 seconds to recall it? Okay, sir. That's the best way. Always seek permission. Okay. That is the third point. No facial expressions. Absolutely no. उसमें ये गड़बड़, छोटी सी चीज के लिए इतना गड़बड़ नहीं कर देना है. That's a wrong impression. Okay, ये हो गया. ठीक है.
नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने एक या दो बार या शायद 3 बार यूज किया, आई थिंक 3 बार, जो वर्ड आप नहीं सुन पाए, द वर्ड्स विच यू कुड नॉट हियर प्रॉपरली, देन यू सेड कैन यू पार्डन द वर्ड सर, दैट्स नॉट करेक्ट इंग्लिश, यू से Okay, sir. पार्डन मी सर आई कुड नॉट हियर। ऐसा सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए इंटरव्यू में। तो ये तो ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू हैव फेस दिस डिफिकल्टी देयर। In the actual interview, physical face-to-face interview, you should never have to say, "Sir, sorry, sir, I could not hear your question." No, that's completely impermissible. And that is why you should be very careful. For instance, even though you heard my full question, you had to ask me, "कि sir, वो last में क्या था?" And then I told you verdict. Okay, Okay. sir. हाँ. In that case, it was not communication gap. In that case, it was your hurriedness to answer. You let the question finish properly. All components of the question should be studied in your mind. कि हाँ अब मेरे दिमाग में बैठा ले 1 2 3 4 चीज पूछा है सर ने, अब मैं बोलना शुरू करता हूँ. So you have to let the questions voice repeat in your mind once, and that is why it is advised कि 2 सेकंड 3 सेकंड का गैप लीजिए, क्योंकि सबसे कार्डिनल, it will be the cardinal disaster if you have to ask, excuse me sir, बाकी क्या पूछे थे? नो, डोंट डू दैट. ओके, वो नहीं करना है. क्वेश्चन ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल टेरिटरी है, इसमें तो कोई माफी ही नहीं है किसी को भी, और तुम्हें तो और भी नहीं, बिकॉज यू विल बी, आई मीन जिसको आता है, तुमने मेहनत की है, तुम्हें आता भी है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्लाइट इररेस्पॉन्सिबिलिटी और स्लाइट हरीडनेस और कॉम्प्लेसेंस you lose a merit point. That will be very shameful for all of us, isn't it? Because Yes, you know the answer, you can reply, but you did not listen to the question properly. This is called unforced error in tennis and badminton. कि खुद ही आउट मार रहा है, सामने वाला स्मैश मार दे और हार जाए, कोई बात नहीं, अच्छा खिलाड़ी है, कोई बात नहीं, अपना ही आउट मार के जो, नो, we don't do that in as important an interview like this. Okay, that's one. Then I have my own reservations, even though this is a very personal matter, but somehow I have my own reservations as to whether you should say this or even hold this thought, harbor this thought that your sole purpose of life is becoming this and that. I think human life is much bigger than that, although it is a subjective philosophical understanding of every person. But even for a candidate like you, a bright mind like you, I would say it will be a shame if the sole purpose of your existence is becoming this or that. That will be too, I'll say it will be, you are trivializing your life. Don't do that. Okay, that's not the sole purpose. It is an important objective, an important goal, but it can never be the whole or sole purpose. That's not, I mean, my seniors will educate you on that more. One more thing I would like to add. Yes, very important. When you are asked to give your introduction, then it is advisable that you limit your educational background only to the last 2 degrees. I did my LLB from here and LLM from here, and that should suffice. Do not go into कि इस inter college से 10th किया था या 12th किया था. That's my understanding. कि LLB, LLM, they tell everything about you. You tell about the place from where you have studied or where you hail from. You tell about your parents, your background, your latest qualification, and limit it. I meant to say it is on you, but try to give only a glimpse, small glimpse of everything. Do not elaborate upon it. कि यहाँ से क्या था, वहां से क्या था, बहुत ज्यादा नहीं है ना, इसको कम करेंगे, it will help you. It will help you very greatly. And on the question of attire also, थोड़ा सा आप फंस गए. I think you and I both agree that this is a very special occasion of your life, isn't it? It's a very special occasion, perhaps one of the most important occasions in your professional life or educational life, isn't it? Yes, sir. Then there is no hesitation or there's no shame in admitting and acknowledging it, that since this is a very special occasion, sir, so I thought I will not leave any stone unturned, and I'll reflect my preparedness and my sincerity in all aspects of my personality, including my attire. Okay. That's fine. इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसको कैसे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि हम टाई क्यों लगाए हुए हैं. बट देन यू जस्ट टेल कि हम जितना सिंसियरली जो सर कर सकते थे, बहुत सारा चीज हिंदी में, उसका मतलब ये है कि सर जितना हमको बड़े जने गुरुजनों ने बताया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, सब किए हैं,
और अगर इनोसेंस में हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सिंसियर और इनोसेंट एफर्ट है हमारी इस तरफ से. दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज द इंप्रेशन यू वांट टू लीव ऑन देम. कि इन्होंने कुछ जबरदस्ती का हम उसमें नहीं करेंगे कि ये कॉटन है, ये फलाना है, ये इंडियन नहीं है तो भी हम इंडियनाइज के कुछ नहीं कि सर ऐसा प्रयास किया है. And this is my innocent attempt that nothing with regards to my presentation today, no stone should be left unturned. So that is what my attempt is. तो बहुत ज्यादा मेरिट्स में नहीं जाना. याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सी चीज में बहस करनी है या आपको एलेबोरेट करना, और कौन से में सरेंडर कर देना हाथ जोड़ के, कुछ नहीं. दैट क्रिएट्स अ लॉट. ये मालूम होना चाहिए जितने पर्सनल अटैक्स हो, रिमेंबर दिस एज अ थंब रूल, जितने भी पर्सनल अटैक्स हो उनमें कभी भी मेरिट्स में डिस्कशन नहीं किया जाता है. उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया जाता है. सेंस ऑफ ह्यूमर या सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, दो में से वही बाहर निकला जा सकता है. पर्सनल अटैक्स में आप बाहर नहीं निकल सकते. अगर मैं आपको बोल दूंगा कि मजा नहीं आ रहा, बाकी सब तो ठीक है, आपने तैयारी वैयारी तो किया है, लेकिन पर्सनालिटी में वी डोंट फाइंड योर पर्सनालिटी सुटेबल फॉर अ जज. आप क्या करोगे, कैसे बहस करोगे इस पे? वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, अ वेरी हार्ड सिचुएशन. इफ सच एन ओपिनियनेटेड रिमार्क कम्स देन इट विल बी वेरी हार्ड. ठीक है, तो तो तुम्हें इसमें ये नहीं बोलना है कि सर with kind blessings and my sincerity, I believe that personality is a trait that can be transformed under the able guidance of seniors like you and by the way of human resource training that I will be receiving. And life is a learning trajectory, and I believe that I am sincere enough to modulate myself according to the requirement of the nation that I wish to serve. अब इसमें बहस नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारा भी रंग तो यह है, तुम्हारा भी मुंह, तुम्हारा तो दांत इधर निकला हुआ, ये थोड़ा कर सकते हैं कि वो भी तो राष्ट्रपति बन गए थे, उनका तो ऐसा बाल था. नो, यू कैन नॉट डू दैट. ऑब्वियसली आई एम जस्ट टर्निंग इट इनटू ह्यूमर. सो दैट इज फ्रॉम माय साइड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन का मेरा इतना पॉइंट मुझे समझ में आया. और आई टू आई कॉन्टैक्ट वगैरह तो बनाए ही रखना है, वो सब तो बेसिक चीज है, आप जानते हैं. बट अगर इन सब में से कोई एक चीज सुधार सकते हैं, देयर इज ओनली वन थिंग, प्लीज स्लो डाउन. You must slow down. Okay, slow down कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. इसमें आप अपना हार्म कर रहे होंगे. तो मेरा इंप्रेशन आपके लिए है कि आपकी तरफ से कोई भी चीज नेगेटिव फील नहीं हुई मुझे, कि ये आदमी नहीं होना चाहिए सर्विस में, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ. अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके. और जो मेरिट्स वाले पॉइंट्स हैं उसमें आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि क्या होना चाहिए. प्रेजेंटेशन पे दिस इज माई फीडबैक. Himanshu, you have given a very nice interview, and I am very happy with your English also. Being from a Hindi medium student and from the lower middle class family, your English is quite good, and there is no problem as far as your language is concerned. The speed is certainly an issue, and it is generally an issue with the aspirants. Last time when one girl Bhavna came to us, I was very much disturbed how to control her speed. We have worked months and months to control her speed because we were very keen to take her on the top of the rank of the IAS examination. So we have worked very hard. One of the suggestions given to her, when you start speaking, you say first 1, 2, 3. Suppose a question has been asked, you still in your mind, it has been tested and she has done it in the UPSC. When the question asks you 1, 2, 3, जब आप ये बोलोगे तो इस फायदा क्या, व्हाट्स बेनिफिट, यू गॉट ए सर्टेन टाइम which will control your speed also, and it will give you time to think also. So you just think on this. And why, and if you see your video of we purposely record the video of every class. The reason being, I want to supply it to the aspirant so that they can see it again and again. And you can find fault in yourself. That's why we put a lot of trouble to record this and put it there. So if you find that your speed, where you knowing the answer, your speed is much faster. Where you're not knowing the answer, your speed is not faster, you are nervous. So there is two problems with you. Once your speed is fast, second, you have a nervousness when you have not having the answer. Second, you are very impatient to answer. You don't be impatient, just wait. One question Jaswalji asked about the section Article 142. It was a full toss. You left it. Every candidate in the interview got 2, 3 full toss. You capitalize that. When you got a control in the question of Article 142, you just capitalize, you speak a bit more on that.
Don't leave any question unfinished or on halfway when you are knowing answer very well. Therefore, you should not very eager to answer and you should not very eager to close it. Second thing I Okay. noticed, when after 2, 3 questions you are not able to answer, nervousness is very palpable on your face. Just try to control it कि अगर 2, 3 सवाल नहीं बताए, doesn't matter. Nobody is going to give you marks. You have given 3 answer or not given 3 answer. They are going to give you answer over overall personality. I am very much disappointed about your current affairs study. You have said that my main area of thrust is the constitution. I asked only the current affairs from the constitution. And you have no excuse that I'm not prepared the current. I'm thinking as I'm gathered, you are not reading the newspaper. My suggestion to all aspirants, read newspaper very carefully till your interview is going on. And whatsoever is related with the law in the current affairs, you prepare thoroughly. If you got that question, you hit it, you kill it. And that question may take you towards the academy. You may get the job. It is very important. Second, I totally agree with you, Shaur. When the question was why you want to become judge, don't. It shows your desperation to get the job. As soon as you said my sole purpose is to become judge, it's your desperation to get the job. What this implies, if you are not getting this job, then you are very disturbed. A judge need to be emotionless. A judge need not be emotional. Your this answer is Okay. very emotional answer. I keep telling to all my aspirants, do not be emotional at any moment in the interview board. You need to be realistic. You can give the better Okay, sir. answer. I want this job. Yesterday, this issue has been discussed in details. And 4, 5 points we have earmarked. Social prestige hai, security of life hai. You are getting challenges in the life. You are able to do something for the society. You try to prepare from this way. One question probably Jaswal ji asked, the research scholar, a teacher versus judge. It's very easy question. There is no problem in this. You said I want it's my preference. No, sorry. Nobody can force you what your preference. You choose your preference, you justify it. But sir, I want you. Yes, sir. Suppose by teacher के साथ क्या है कि a teacher is academician. He may taught to the masses, but the judge is academician also. Judge is teaching the masses also. The judge is doing the justice also. Therefore, if you try to compare these two very easily, you can answer very successfully. Your introduction is unnecessary using I am from middle class person family. Why are you using this? It shows your inferiority complex. Don't try to say anything where which is not required to tell. My father is working in the building trade. I have 5 siblings. I have done my LLB from here, LLM from there. Enough. Why you are saying that I'm middle class, I'm lower middle class, I'm poor family? I don't advocate and suggest to say any aspirant. It is your, if you are a lower middle class, it is your strength. If you are SC candidate, it's your strength. You are handicapped, your strength. You are woman candidate, your strength. It is not your weakness. Okay, Therefore, sir. you should not put in the front of the interview board that I am lower middle class, so I need sympathy. No, you should not do this. These are the few of things you need to. If you want to say my area, strong area is the Constitution, you should read a bit more. Whatever I ask you from the Constitution, you should know this. And I'm disappointed only because these are coming in the newspaper last 20-30 days. It doesn't need to read any constitution book. You will get everything from newspaper. I always educate every boy and girl to read newspaper only because whatsoever is coming in the newspaper is well analyzed. The writer is the well thought of people. The thing you got the newspaper, if you search in the books, you need 2-3 books. That's why always is preferable to read the newspaper and whatsoever related with the law need to be seen there. I think, Siraf, you have done a very good interview. I'm very confident. About tie, I will say question need to be a bit better. But you have decided to wear a tie. There is no issue. You can wear it. देखिए आपका एक साथ और दिक्कत था. One, you are going in the interview board with the tie or Yes, with the sir. suit, and you are saying I am a lower middle class boy.
Unnecessary, you are giving a point to interview board to think against you. Don't give it. Yes, sir. Huh? These are some of the issues. If I have asked any question, you may ask, that we'll proceed for the next aspirant. Second, you always speak English. Next 15, 5, 6 days, जितनी देर आप इंटरव्यू है, you don't speak Hindi. You speak only in English. Okay, sir. Whenever you came here, we ensure purposely try to speak English with the English aspirant, Hindi with the Hindi aspirant. Sometimes we may miss because I do not know English, Hindi, but you always speak the language in which you are going to appear. Yeah. Okay, sir. Jai Mashu. In an interview, I have told this, sir. Abhi, before this interview, I have given also an interview in which I have said that my favorite subject is evidence law. Then teacher advised me that you do not say evidence law because you have done master in constitutional law, so it will be better to answer constitutional law. Sir, what should I do now? Yesterday I told ki if you ask what is the very safe bet to say in the report, I always say the constitution. There's two reasons. Number one, you will get the question because more or less everybody knows the constitution. Second, it is easy to prepare the constitution. Yes, sir. And if your mastery is in the constitution, then you should say that. Otherwise, they may ask a question. It is an individual choice. It's my own opinion. I'm not saying that anybody is prepared someone else to say this. But if the question is asked, I always say, tell the constitution. Even for IAS aspirant, I suggest this. Because constitution more or less everybody knows. ये दोनों बता सकते हैं होएगा सर. हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बता सकते हैं, साथ साथ एविडेंस भी बता सकते हैं. ये जो इनकी चॉइस है, भी थोड़ा सा इनकी चॉइस है, जो है बड़ा हो जाएगा. इनकी चॉइस है. क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ये इनकी चॉइस है. क्या बताना चाहते हैं? We are just giving. We are here to assist you. You should not commit a mistake in the interview board. Why we are all insisting more and more? एडवाइस ले रहा है तो मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही जसवाल जी. तो हम चाहते कि आप लोग ज्यादा लोग उसका रीजन सिर्फ एक है कि the mistake which you are going to commit in the interview board, you commit here. नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने दोनों लोगों ने बताया है. मैं ये बहुत So if you commit a mistake here, we can rectify it. If you commit a mistake in interview board, it can't be rectified. Yes, sir. Okay. और कोई सवाल? No, sir. नेक्स्ट किसका ले? आलोक आप दोगे? कौन देगा? यस सर. जिनका प्लेटफॉर्म मिल गया और ये अभी भी चाहे तो कर सकते हैं. और आपने दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई. बहुत अच्छी. श्योर. हाँ, आलोक शुरू करते हैं. हाँ, आलोक शुरू करते हैं. हिमांशु वर्मा का सर नंबर है. हिमांशु वर्मा. चलो आ जाओ. चलो सॉरी. हिमांशु, लास्ट चीज बस नोट करते जाइएगा. Since you were a little confused and I do not see that satisfaction on your face regarding the choice of mentioning the specialization or the area of interest, constitution and evidence. I think you have been advised to say constitution instead of evidence because of the specialization that you have done in your LLM, I believe. That is the only reason. Otherwise, they will trap you and ask you, then why did you not pursue evidence or something like that? Yeah. And that is why it is all the more advisable that you mention both the things together. Okay, sir. Then they will not be able to trap you. Both the things as area of interest, that will suffice. Don't worry about that. Okay. Thanks, sir. One of my suggestion to all aspirants, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कंफर्टेबल हो उसको जरूर यूज करो. तो आप बोलो ना यार क्या दिक्कत है. अगर नहीं हो तो मत बोलो. आई एम नॉट सेइंग यू फॉलो माय एडवाइस. आई एम सेइंग इट इज वन ऑफ द एडवाइस. इफ यू आर कंफर्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप यूज करो. आप उसको
कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल अच्छे बन जाते हैं, करंट अफेयर से बनते हैं सवाल ज्यादातर. इट्स माई लॉन्ग एक्सपीरियंस टू टीचिंग यू गाइज. आई फाउंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो आप 2 घंटे न्यूज़पेपर? मुझे समझ नहीं आता है. व्हाई यू आर नॉट रीडिंग? रीड इट ना. हम रोज Yes, sir. आपको नोट भी करते हैं सवाल. चलो, यस हिमांशु. यस सर. Sir, my name is Himanshu Verma. Let's start. Wait. Oh, oh, sorry, sir. हिमांशु थोड़ा सा इसको जूम आउट करिएगा, ताकि वी वांट टू सी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर टॉर्सो एंड हाउ आर यू ड्रेस्ड एंड सो. ये तो थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा शर्ट वगैरह का. अल्टीमेटली जब आप प्रिपेयर हो प्रॉपरली तो एवरीथिंग शुड लुक इन ऑर्डर. Right, that's very good. That's fine, that is fine. So you have been following the interview that just concluded, isn't it? So keep Yes, all sir. the inputs and all the feedback in mind, whatever has been told to him, that you will start imbibing for yourself also. Okay. What is your area of interest in law? Sir, my area of interest is constitutional law. All right. How do you see the Constitution when you juxtapose it vis-a-vis the cultural evolution of this landmass called India? Is it an Indian Constitution in its true sense? Say, as India is a very diverse country, our constitution makers have incorporated this diversity. If we see the fundamental rights, they have given us the affirmative rights, that is of a reservation to SC, ST, OBC. They have also seen our historical perspective where untouchability has been there. So they have incorporated an article on untouchability. They have also incorporated the Gandhian principle of democracy at the grassroots level, that is Panchayati Raj and municipality. So by these attributes, you wish to imply that the Constitution, in fact, reflects the ethos of Indian society, isn't it? Yes, sir. Are you aware of the term secular? Do you Yes, think sir. secular is a word that resonates with the word dharm nirpeksh? Do you think they are both are the same things, or it is a westernized concept unnecessarily introduced in India? What is your view? Sir, I totally agree with you. Secularism is the Indian concept of the dharm nirpekshtavat, that everyone is equal. There is no division. Earlier, when at the time of I'm sorry, sir. Can I take a moment? Our Indian society from the very beginning has been divided in a caste, creed, and many others. So when our constitution makers started writing the constitution, they incorporated this principle of secularism, so that there cannot be no discrimination between them, because India has a very vast history of discrimination and other Discrimination based on? discrimination based on, sir, caste, creed, culture, and But religion is nowhere in your answer. Then how do you connect it to secularism? sir, Indian society from the very beginning has been divided on the basis of the religion, Hindu, Muslim, and later the offshoots of Hinduism also developed, that is Sikhism, and everyone. The problems which in Hindus there was in Hinduism, the problem was there in Hinduism. So many new offshoots has been developed to cater this. That's why I see that there was a discrimination earlier. All right. You must have heard about the doctrine of eclipse. Yes, sir. What is that?
So doctrine of eclipse is in Article 240 is in Article 245, where it says if any law is made, but Supreme Court has by Supreme Court has by its judgment has overruled it, then eclipse has been put on it, and the law for the time being till the judgment of the court is there, the law will not be came into force. Are you sure about it? Or does it have anything to do with fundamental rights and the consistency of a law with the fundamental rights? Yes, sir. It has to do with Article 13 puts that if the law, the earlier law or any law which has been made, which will contradict the fundamental rights, then the eclipse of fundamental rights will also be on there, and the fundamental right will be enforced, and that law will be declared void. Okay, fine. That's all right. Do you think that the separation of powers, separation of the three wings, actually and practically exists in Indian context? Can I take a moment, sir? Yes. Sir, separation of power is there in Indian constitution, but we cannot say that it is truly India is a truly federal. India has a truly federal structure, because our legislature, our executive, are they are intertwined, as the legislatures are also the ministers, so they perform the legislative functions. Also, they perform the executive functions also. But the judiciary, we can say that judiciary is separable. So, in my opinion, sir, legislature and executive are not and but executive, but India is trying to be a federal. India is trying to follow the federal structure. Right. What is your educational qualification? LLB or LLM? Sir, I have completed my BLLB from Dr. Ram Manohar Lohia National University, Lucknow, from 2015 to 2020 batch, and then 1 year LLM from Banaras Hindu University in constitutional law, and currently I am, sir, pursuing PhD in Banaras Hindu University. All right. What is your domain in PhD? Sir, my PhD topic is rights of arrested person with special reference to DNA-based technology. All right, all right. Please, you elaborate upon it. What has been your finding till now? Sir, till now, my finding is that there has been innumerable rights have been given in CRPC for the arrested persons. But as our science is going so far, our science is going so far, so there is a need to give there's need to revamp the need to revamp the CRPC, as if we see the latest law which has repealed the Prisoners Identification Act of 1920, the government has given the foot samples, the hair samples, swab, all everything samples can be taken by magistrate under section 53. This mentions the when the person is arrested, his DNA can be taken, and even in rape cases of under section 53A, the DNA samples can be taken, and this hampers the right of arrested person, and because as we are moving as the science is moving, sir, now the science can enter into every aspect of our body. Even the MRI is happening, even even many tests has been developed. So there's a need of privacy. There's a need to balance the privacy rights, mental privacy, physical privacy. Every privacy has to be balanced. So my topic is on this: how to balance and how to make a new law on this respect. All right. And when you say balance, then on Yes, one sir. side of the balance, you already mentioned that mental and physical privacy of the accused or of the arrested person, so to say. What is the on the other side of the balance? The other side is the, sir, side of investigative agencies' right to investigate the case. So they also have right to, as India, the investigation is the hand of state machinery. So crime.
सर क्राइम को हटाना भी एक स्टेट का ड्यूटी है, बिकॉज वी हैव रिपोज द ड्यूटी ऑन द स्टेट. So there is a need to balance both rights, our individual right and our group right. The group right is of investigative agencies and the whole, because as When per an our fundamental. arrested person, let me interject here, when an arrested person files a case on the basis of breach of privacy, what is the constitutional basis for it? That's what I'm asking. Sir, under Article 21, the case Kutta Swamy case has said that right to privacy is our fundamental right. All right, all right. So give me an example. Do children also have right to privacy? Sir, sir, if we talk of the recent bill which has been introduced of digital personal identity. I'm sorry, sir, I cannot recall the That's exact fine. name. Just tell us the crux of the law. Here in that the concept of parental control has been introduced. The concept of parental control has been introduced, in which it is written that if the parents, unless the parents permit, no one can breach the privacy of the child. Can the parents themselves breach the privacy of the child? I'm sorry, sir, I'm unable to answer this. All right, that's fine. That's fine. That's absolutely fine. Tell us about your hobby. What do you love to do other than the academics? Generally, I watch web series of crime thriller series. All right, very well, very well. Which was the last series that you enjoyed? The trial, sir. The trial. Yes, sir. Okay, okay. So how does a trial start? What is the document that starts a trial? The record. Sir, for trial, trial starts after the charge sheet is submitted by the police. The magistrate took the cognizance of the case, and if he finds in the charge sheet that any material has been there or any offense, if it appears to the magistrate that the offense has been committed, then he can frame charges and proceed for the trial. All right, all right. We were talking about your PhD topic that involves scientific investigative methods and all, isn't it? Yes, So, sir. do you also see the possibility of misuse of DNA forensics? Yes, sir. How can be misused? Have you heard Sir. about? Let me rephrase my question, my dear. Have you heard about chain of custody? Sorry, sir. Chain of custody. How evidence is preserved? I mean to say. Sir, as the new act has been came into force, it has said that the DNA of anyone or the swab or the has to be preserved for 75 years. There is a three classes of three categories of persons has been made. One is the convicted person, one person who is under punitive preventive detention, and other is only the arrested person. Charge sheet has not yet been filed. So if anyone is convicted, then his data has to be preserved for 75 years. And if later any point in time any case occurs, सर जहाँ पे मतलब ये पता नहीं चलता कि whether who has been committed the crime, so they'll go and check from their earlier records that whether who has been committed. The FBI is using this technology from almost 2 years, and the person who are under who are preventive detention or the arrested persons, their data after if they are not convicted, their data will be disposed of. Okay, okay. One more question from my side. Suppose you are presiding over a particular court hearing. You are the judge. Can the advocate of the accused open up before the court? Would you allow this or would you entertain this? That the advocate wants to withdraw from the case because the advocate knows that the accused is actually guilty. Sir,
as the communication between the advocate and the accused is privileged communication, and if does not anything in the after coming after establishing relationship between advocate and if he has not committed crime, then he can very well withdraw from the case. And but he has a condition has been imposed from the Indian Evidence Act that nothing has to be disclosed. He can very well withdraw, but he cannot disclose anything about information about his client. Okay, now just the second part of the second phase of this coin. As an advocate, suppose you are the advocate and somebody, some accused whose case you have now taken, the letter of authority and all that has got signed, you are now the counsel for that particular accused, and the accused actually confesses the crime before you. What will be your moral call or ethical call? Suppose it is a heinous crime. It is a heinous crime, suppose. What will be your moral call? Would you still proceed representing that particular accused or your client, or would you withdraw? So my moral call will say that withdraw from the case. All right. It will, sir. My last question is, where do you rate yourself in the matter of honesty? If I were to tell you on the scale of 1 to 10, where do you frankly and honestly you rate yourself on a scale of 1 to 10? Where do you rate in terms of integrity? Sir, 8. All right. That will be all from my side. Let us hear other respected members. Yeah, जसवाल जी. हाँ, ये इनका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है रिसर्च का. तो एक मैं इनसे मेरी आवाज आ रही है? Sir, it's quite fluctuating. हाँ, फ्लक्चुएट कर दिया है. अच्छा, मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डू यू एग्री criminals are more smarter than police? Do you agree criminals are more smarter than police? No, sir, I do not agree. Why? Because our investigative machine, sir, our investigative machine is performing well, and it has solved all almost every difficult cases if we see the past records of. भाई आप ये देखो कि ये साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और Yes. आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कंप्यूटर जो रिसोर्सेज हैं उसको भी हैक कर लिए जा रहे हैं. तो कौन स्मार्ट हुआ, पुलिस स्मार्ट हुई या क्रिमिनल स्मार्ट हुआ? Sir, I accept there is an infrastructure lag, but where infrastructures are there, and if we take the example of Delhi and other states, they are performing so well. नहीं तो आप ये मान लें कि पुलिस ज्यादा स्मार्ट है क्रिमिनल से, पहले ही पकड़ लेती है क्राइम कमिट करने से पहले. Sir, if machinery is provided to the police, they'll certainly do the best. या पहले से तो पता ये- है आपको? Sir, as my topic relates to this, I have studied on, sir, the Lombroso's theory of crime prevention, where they provides that if we have a proper MRI scan and everything, then we can certainly predict what the person will do. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपके टॉपिक सही है कि अरेस्टेड पर्संस के फेवर में बहुत सारे लॉज हैं. Yes, sir. आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट हैं. तो एज ए कलेक्टिव फॉर्म में स्टेट और उसके बीच में
भाई उसके ह्यूमन राइट्स हैं तो क्या स्टेट के और पब्लिक के ह्यूमन राइट्स नहीं है? किसको आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे? I'm sorry, sir. I'm unable to hear, sir, because network fluctuation. एक्यूज के फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं, तो क्या स्टेट एज ए कलेक्टिव फॉर्म में उसके कुछ राइट्स नहीं है? वेट किसको दिया जाना चाहिए? Sir, मेरी आवाज कट रही है लग रहा। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। I will repeat sir's अच्छा, question. Are you able to hear me? I'll repeat sir's questions. Yes, I think I yes, got it. yes, Sir sir. is asking you, if you were to balance the human rights or rights of the person or the individual accused and the rights of the state as a collective machinery, do you not see that equal priority or equal weightage should be given? Or do you see that the rights of the individual should be given more priority, more sensitivity than the rights of the state? Sir, hello. हाँ सर ने सही पूछा, आप बताइए। Hello, sir. हाँ, आप आंसर दीजिए ना, सब लोग सुन रहे हैं। Sir, I'm reconnecting it. I'm sir, reconnecting it. Please give a minute. नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है वजह सर, तो मुझे लग रहा है कि मैं बार बार कट जा रहा हूँ। क्या है, वाईफाई बेहतर आता है, जो डेटा है उसको तो अच्छा आता एक्चुअली क्या है, मैं अभी गेस्ट हाउस में हूँ ना, यहाँ वाईफाई नहीं है, तो हमारे मोबाइल में जो डेटा है और घर पे भी नहीं है कि उसको आईपैड वगैरह पे देख सकें, तो ये है। तो चलिए ठीक है, आप लोग कैरी कर लें, आवाज इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। या Thank you, sir. अनुज, Thank you, Sorry, sir. 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 Sorry, sir. हाँ, अनुज जी आपने Sir, sir. Sorry, sir. It's हाँ, okay. It's कोई okay. बात नहीं, सर का क्वेश्चन तो सुन लिया था आपने। Sir, pardon me, sir. Please. Rights of the individual accused versus rights of the collective machinery of the state. Who do you prioritize and why? Sir, rights of individual has to be prioritized, but because state has more power, so individual rights has to be balanced. Collective, there is a collective right, but individual is sir, from in 21st century, the individual rights are more important. हाँ, अनुज सर आप पूछे सर। Sir. Himanshu, Yes, sir. you mentioned your topic of the thesis is the right of the arrested person. Yes, sir. And what are the essentials of the rights? Can I take a moment? Sure. Sir, right is a legally protected right is a legally protected interest. I'm just asking to you, what are the essentials of the rights? Elements of a rights. Sorry, sir. Cannot record at this moment. Inherence of rights, incidence of rights, title of rights. Have you heard this? There are 5 essentials in a jurisprudence. Okay. Sir, I have read but unable to record it. Right. Sorry, sir. Section 112 of the Indian Evidence Act क्या प्रोवाइड करता है? Section 112 provides for the conclusive presumption on the paternity. If पैटर्निटी कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन है या वहां पे लेजिटिमेसी वर्ड यूज हुआ है? sir, legitimacy of sir, paternity. Okay. So section 112 of the Indian Evidence Act is a conclusive proof. Yes, sir. If the
Yes, sir. If in excess is not, if in excess cannot be proved, then it will be conclusive. And what is the conclusive proof? If one fact is proved, then another will be presumed to be proved. Presumed to be proofs. Then how court allow to take the evidence if the section 112 of Indian Evidence Act is a conclusive? The section 112 is the in excess is proved through the in excess is proved through DNA and by DNA they try to get that at that point when the child was begotten, I was not there. That in excess is into doubt, not the pattern. Yes, sir. By that paternity, I'm sorry, sir, cannot recall. Okay. DNA test is allowed. The DNA test is allowed, but not in a routine manner. Okay. In exceptional cases, a high court allowed. Whether this is a constitutional? Not yet, sir. Not yet. Then how it is allowed by the court? Sir, it is allowed because the court acknowledges it in sir Evidence Act that Article 20 Class 3 provides yes, no accused person shall be compelled to be a witness. yes, sir. Then how investigating officer or a court give the instruction or a directions to taking the sample of DNA? Is there not, is it contradictory? Sir, it is not contradictory because the Supreme Court Supreme Court in a number of rulings in Lata Madhvik and the case of ND Tiwari, they allow it that they allow so that the as the child's benefit is the paramount importance. On that basis, they allow this. Only in a case of No one should be bastardized, sir. only in a case of child. DNA is allowed only in a case of child. Sir, in the case of Selvi, it was said that the DNA fingerprints and narco analysis has been if consent is given. Just tell me, to be a witness and giving the evidence, is there any difference? Sir, साक्ष्य देने में और साक्षी बनने में कोई अंतर है? yes, sir. क्या? सर, साक्ष्य देने वाला जरूरी नहीं है कि वो विटनेस हो। कई बार ये होता है कि सिर्फ उससे जो है कोई डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा मंगाया जाता है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट या यही सब देने से वो साक्षी नहीं बन जाएगा। जब उसे स्पेसिफिकली समन किया जाए कि ही इज अ विटनेस इन एनी केस, देन इन दैट केस ही विल बी अ विटनेस। ये कहाँ बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में? इज देयर एनी प्रोविजन? Yes, sir. There is a provision, but I cannot recall it right now. Okay. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं? Sir, in the case of Ambika Mills, it was held that it will be applied on both. दोनों पे एप्लीकेबल है? Yes, sir. Pre-constitutional laws already Article 13 has been provided that if any law is made in contravention of fundamental rights, that will be void. But even though after that the Ambika Mills case, Supreme Court has provided this that it will be applied in both pre and post constitution, even though it was there in Section 31 of the CRPC and Section 165, Section 65 of the IPC. Yes, sir. क्या है? So section 65 of the IPC provides that if in any case the magistrate awards him punishment and fine, then one moment, sir. कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है? Yes, sir. Sir, carry forward rule has been provided in Article 16
it basically uses in the case of appointment of any public offices. If in public offices any vacancy has been remained vacant, then it will be carried forward to it will be added to the next year's vacancy. This was declared unconstitutional. Yes, sir. This was declared. Yes, sir. In which cases were declared unconstitutional? Sir, as far as I can recall, it's M. Nagarajan. कॉन्स्टिट्यूशन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपने बताया था ना. Yes, sir. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में डिफरेंस क्या है? क्या था और क्या है या नहीं? Sir, there is a difference between due process of law and procedure established by law. Procedure, we have incorporated procedure established by law, which has been taken from British concept, and the due process of law is a American concept. So in due process law, the law should Procedure not. established by law is taken from the British law. Sorry, sir. चलिए आगे बताइए. And so due process of law is that there should not only be a law should be just, fair, and reasonable. And certain procedure established law, if law is there, if law is there, then it will be valid. India in by after the case of Menaka Gandhi, India has also proceeded towards due process of law. In a case of Menka Gandhi, procedure must be just, reasonable, and fair. What is the meaning of reasonable? Can I take a moment, sir? Sir, in my opinion, sir, reasonable means the law should not be the law should be according to this according to the norms. It should not be unjust. And what is the doctrine of trust in a constitution? Sorry, sir, cannot recall right now. Thank you, sir. Yes, Himanshu. Yes, sir. Himanshu, you have said that your area of interest is the Constitution. Yes, Yes. sir. Yes, Why you sir. are saying that? Why your area of interest is the Constitution? Why? What's the reason? Sir, as the constitution is the grand norm of our country, every law is tested. Every law is tested on the basis. So I have a deep interest as to study the basics of as how India proceeds towards a better nation. As the constitution provides us how to govern, and all the laws derive their sanctity from constitutions. That's it. There is one very important aspect of the Constitution is under debate. Recently, the ex-Chief Justice of India has also questioned this. What is that concept? Sir, basic structure doctrine. The first time the basic structure of the Constitution has been emerged from which country? Sorry, sir. First time basic structure of the Constitution has been emerged in which case in India? Sir, basic feature has been emerged in Golaknath case, and the basic structure. You listen question carefully. First time in which case the basic structure of the Constitution has been emerged? Sir, Keshanand Bharti case. Shankari Prasad or Sajjan Singh? Sorry, sir. What is basic structure of the Constitution? Sir, basic structure of the constitution is that that any law which is made, it should not be unjust, unreasonable, and
it should cater the needs of the. One moment, sir. Hmm? Sorry, sir, I cannot recall it. Hmm? If I ask you one difference with Rajya Sabha and Lok Sabha, only one difference, what you will say? What is one very important difference you can, most important difference? Lok Sabha members are directly elected, and Rajya Sabha members are elected through states. I am giving you the three options. Choose what is best one. One, the government is responsible to the Lok Sabha, not to Rajya Sabha. Second, Lok Sabha is directly elected, Rajya Sabha is indirectly elected. Three, Lok Sabha has the prevalence over the Rajya Sabha. Out of these three, what you will choose? The B option. What is B option? So Lok Sabha is directly elected, and Rajya Sabha is indirectly elected. I have given the three options. My question, what is most important? The government is dependent on the Lok Sabha is most important, or the Lok Sabha is directly elected, Rajya Sabha is directly, that is most important. The formation of the government, formation of the executive is dependent upon the Lok Sabha. The moment, because the Lok Sabha is, because the government is responsible, the cabinet is responsible to the Lok Sabha, not to Rajya Sabha. Now you want to change your answer or not? Sir, as we are democracy where here the people is by the people for the people. So first Lok Sabha has to be directly elected. That is more important than the government will derive their identity from there. My question is, do you want to change answer or you don't want to change? I'm explaining you. The cabinet is responsible to the Lok Sabha. I'm again explaining it. The cabinet is responsible to the Lok Sabha. Lok Sabha can finish the cabinet. Lok Sabha can take towards the next general election. Rajya Sabha do not have this power. Second issue, the Lok Sabha is directly elected and Rajya Sabha is indirectly elected. In these two, what is the most important? What is more important? Lok Sabha is directly elected. So do you want to change your answer? No, sir. You don't want to change your answer. Okay. Why it is being said that कि Lok Sabha is the most important organ of the democracy? Because it represents the will of the people as the members are directly elected. So the grassroots representation is there. Because the Lok Sabha is directly elected. Okay. Yes, sir. It is always being said that there is emergency in the country. Right now, it is being said that you are not able to speak much. It is being said there so many times. What do you mean by this? You are saying that it is emergency in the country. You have no right to speak. It has been said a number of times in the various time frames. What do you mean by this? As government, as internet, we can say that it is the now basic amenity as the government sometimes for the sake of security stops the internet and stops the freedom of speech and expression, and it that's why we can say. Is there any circumstances when the salary and allowances of the High Court judge can be curtailed adverse to their interest? So during financial emergency. On which topic you want me to ask? Sir, CRPC. CRPC. What is CRPC? Just explain me the CRPC. That's all. Explain CRPC.
So CRPC is the procedural law by which the judge the process is gone through as it enforces this as substantive law as it provides how how the evidence will be pleaded and how the case will be instituted, how the cases will proceed, and finally how the judgment how will the judgment will come. So it's basically a procedural law, sir. CRPC, the state list or union list? Sir, it is in concurrent list. Okay. Why CRPC is very important? Because sir, unless we do not have the process or mechanism by which rights can be enforced, there will be uh, no value of substantive laws. Any recent judgment on the CRPC? You remember? Can I take a moment, sir? Yeah. Sir, in CRPC, in CRPC, the recent judgment I can remember is that anticipatory bail once granted, it will go till the end of the case. There is no need to file every time file the bail application. What is curative petition? Sir, curative petition has been introduced by the Supreme Court in Rupa Ashok Purra case, where Supreme Court has said if it looks that the end of justice has not met, then we can reopen the case and see. You are hearing a lot on the common civil code. Sir. Why there is a lot of hangama on the common civil code? Because sir, as if we see our criminal law, there is a uniform application, but if we see our personal law, the Hindus have different marriage ceremony, the Muslims have different marriage ceremony, the Hindus have if any Hindu has to file case for maintenance, he has to go in Hindu marriage act. If Muslim has to file case, if Muslim, they have to go in different case. That's why for a uniformity in the personal law, so that for a single for any irrespective of whether he is a Hindu or a Muslim, a single law enforced in the country. What was my question? Common civil code. Why there is a lot hangama on the common civil code? You carefully listen the question. Why there is hangama? What you answered, I have not asked. Sir, there is a hangama on common civil code as India is a India in India there's an emotional acceptance to the religion, so no one wants to want that the state will enter into into their religion or enter into their house, as they think that their religion is in their religion is personal. So that's why they think that if there will be common civil code, the state will enter into their house. I will post 2-3 pages from the MP Jain on the common civil code. Just read it. You all read it. That's all. Thank you. Oops. Thank you, sir. Yes, sure. Style analysis. हिमांशु पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे I would like to tell you about presentation aspect. You have done very well. Overall impression is good. There are certain very acute points where you need corrections, and if those corrections are made, then your presentation is okay for me. I'll pass it, yes. But there are 2-3 things, major things. One is you are too serious. Okay, that's not required. You be in a conversational mood, as it is called. How you converse with people, with elderly, when you get to learn something, when they tell you something extra that you did not know, then how do you react?
you react with gratitude, don't you? If somebody tells you something that you did not know, then there is a smile of gratitude कि wow, एक नया चीज हमको बताया, ये जो कि अभी आई, देखो अभी आई है जब तुमने सिर हिलाया. So this, be normal, be absolutely normal. You are too serious for the occasion. This much of seriousness is not necessary, okay? And that seriousness, I understand, that is emanating from the nervousness and from your resolve not to go wrong even in one question. That resolve is impractical, to my respectful opinion. Do not resolve that you have to give answers in such a manner that all your answers are correct. No, don't keep that burden on your shoulders. No, that is okay. There will be certain questions which you will not be able to reply. Accept this, embrace this situation, and then feel comfortable. Number one. Number two, you must stop shaking and swinging when you are answering or listening to the question. This is happening. It is a very difficult thing. I know. मेरा पैर हिलता है, किसी का पूरा शरीर हिलता है, सब अलग अलग होता है, प्रॉब्लम होती है. बट ऑब्वियसली इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट है दैट यू कैन नॉट डू इट. सो आज से इस पे काम करना शुरू कर दीजिए. शीशा के ही सामने बैठ के बोलिए सारा. You cannot allow this. Okay. 2, 3. You should be more pacified. I am not saying slow. Your speed is okay, but you can be more pacified. When you end one sentence and then begin the other one, subsequent sentence, be a little pacific, be a little more peaceful. There's no need कि ये बोल दिया फिर ये बोल दिया फिर, ऐसा नहीं है. आराम से बात करिए. ठीक है. तीसरी बार आपने पीएचडी का बताया है तो अच्छे से उसको तैयार कीजिए. छोटे सेंटेंसेस रखिए, लंबा बहुत ना बोलिए. दोनों मिक्स हो गया. पीएचडी वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. चेन ऑफ कस्टडी वगैरह सब मालूम होना चाहिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जस्टिस का मिसकैरियज करता है ना, कि चेन ऑफ कस्टडी अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर जो एक्यूज्ड है वो निकल जाएगा. एक जगह भी गड़बड़ हुआ तो निकल जाएगा वो, कि सैंक्टिटी नहीं मेंटेन होगी एविडेंस की, देन इट इज ऑफ नो यूज हाउसोएवर स्पेसिफिक और गुड एविडेंस दैट वाज. अगर सैंक्टिटी नहीं मेंटेन हुई तो वो हो जाएगा कि इसमें ये तो मिलावट हो गया होगा, कंटेमिनेशन हो गया होगा डीएनए का, हम क्या क्या ऐसी चीजें तो आप जानते हैं. सो बी थॉरो विद दैट एस्पेक्ट. एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उसमें, इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है ये आप जाने रहिएगा. और जो हाँ, एक ये भी चीज ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस आप कभी वो आंसर ना दीजिए जो पूछा नहीं गया है. इसलिए फिर से मैं आग्रह करता हूं, आई एम अगेन इंसिस्टिंग अपॉन ईच ऑफ यू, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. इट विल टेल यू द स्कोप. यू नेवर क्रॉस द स्कोप इवन इफ यू हैव जस्ट वन लाइन. उसके आगे मसाला ही खत्म हो गया तो एक ही लाइन बोलो, मत बोलो उससे ज्यादा. If that does not directly pertain to the question or the topic asked, do not speak. It is better to cut short and say कि सर इतना ही आता है सर. ठीक है. That is all right. Nobody will hold you responsible for that. एक बहुत डेंजरस चीज है जो सब चीजों को आपके लिए नहीं. Everyone please understand this. This was a trick question. I asked Himanshu as to where he rates himself on a scale of 1 to 10 in the matter of integrity. आपके हिसाब से हमारे घर की बहन बेटी का एक्सप्लॉइटेशन का मुकदमा चल रहा हो कहीं पर, जज को आप कहां चाहेंगे कि कहां होना चाहिए 1 to 10 में? आप चाहेंगे कि वो 7 पे हो या 8 पे हो? कैन यू टॉलरेट दिस? नो. ऑल द सर्विसेज, particularly judicial services, all the more, nothing less than 10 will do. So do not hesitate. तुम खुद ही अपने आप को अगर 8 पे रेट कर रहे हो, that is not done. Okay? ये 10 के नीचे कहीं कोई गुंजाइश नहीं है. You should understand. Next, you start speaking Hindi in between. Just 1% of the entire length, but you started in Hindi also. If you happen to do it, then sincerely apologize. Sorry sir. या फिर परमिशन मांग लो या सॉरी बोल दो जब हो जाए तो. सॉरी सर, आई विल रिफ्रेज इन इंग्लिश. क्योंकि वो समझते हैं कि फ्लो में हो जाता है, कोई बात नहीं. दिस मच मैच्योरिटी दे हैव, बट इट एड्स टू योर ग्रेस एंड योर सिंसियरिटी इफ यू सीक परमिशन कि सर थोड़ा सा बाइलिंगुअल में बता सकता हूँ क्या सर, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है. इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. बट लेकिन ये इमरजेंसी प्रोविजन है, इसकी नहीं आनी चाहिए. आई एम अगेंस्ट इट. इन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट इट. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. इट विल गेट सॉल्व इफ यू स्लो डाउन योरसेल्फ और यू गेट पैसिफाइड. यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस. डोंट वरी. देन
you should also catch the words. जब जायसवाल सर ने when he asked you कि आपको क्या लगता है, what do you think that the criminals are smarter than the police, then the most essential aspect of this question is smartness is an individual trait. It cannot be a collective trait, na bhai. Yes. But if I have to say as a collective thing, then I would say कि it depends on the facts and circumstances of each case. Yes. However, say, अपनी बात भी कह दो, however, experience suggests that even though criminals are not bound by any ethical code or rule of law, and police is bound by so many restrictions and despite that, police have almost always tried to outperform the criminals and bring them to justice. That's enough. That's a good answer. लेकिन है ना, तो पहले पकड़िए कि स्मार्टनेस आप किसी मशीनरी डिपार्टमेंट स्मार्ट थोड़ा होता है, आदमी होता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस. इट्स एन इंडिविजुअल ट्रेड. नेक्स्ट इज, ये अच्छा है जब आपने व्हेन यू से दिस कि सर कैन आई टेक अ मोमेंट, दैट इज फाइन. नेवर हेजिटेट इवन इफ यू हैव टू से इट 10 times. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिड नॉट हेजिटेट. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट there is a feedback. When you take a moment, you sought their permission, you took a moment, and still you could not recall, then you say, sir, sorry for the inconvenience. That's what you say. Sorry for the inconvenience, sir, but I am not able to recall even after trying. That's good. That's good. Okay. Or this is for the questions which are factual in nature. Questions which are opinionating in nature, opinion-based questions. There you cannot say कि I don't recall. Obviously, ये तो opinion का matter है, तो कुछ बैलेंस सा बोल देना है कि मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, एक जगह पे और आप कॉन्ट्रडिक्ट किए अपने आप को. हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन आई विल नॉट से, इट विल बी टू हार्श फॉर यू टू से कॉन्ट्रडिक्शन, बट व्हेन रेस्पेक्टेड ओझा सर आस्क्ड यू कि बताओ तुमसे क्या पूछे. So earlier you had said that your favorite area is constitution, but then you said it is CRPC. So you could have very well said it like this, कि sir, in addition to constitution, I think I'll be able to I'll be comfortable in answering questions on CRPC. Never lose that consciousness. We have to be very sharp. Okay. Another point on your body language is this: when you take a moment and start thinking, तो lip movement नहीं होना चाहिए. हमारी आदत होती है, हम सोचते समय गुदगुदाते हैं, सब बहुत सारे लोग होता है. लेकिन अगर भाई थोड़ा सा ट्राई करके, इफ यू कैन इंप्रूव अपॉन दिस, व्हाई नॉट? माय ड्यूटी इज टू टेल यू व्हाटएवर यू कैन, बट किसी भी चीज को लेकर पीछे नहीं पड़ जाना है. आसानी से हो जाए तो भैया बहुत अच्छा है. इट विल ऐड टू योर पर्सनालिटी. देन देयर इज, व्हाइल आंसरिंग, इफ यू रियलाइज दैट ओ गॉड दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत बोल रहा हूं मैं, जो कि हुआ, आपने पकड़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर में आपने पकड़ लिया. जब बेसिक, व्हेन यू आर आंसरिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, देन यू रियलाइज इन बिटवीन कि ये गलत हो रहा है मुझसे, ये तो कुछ और ही बोल रहा हूं मैं, कि ये ऐसा वैसा. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर इज अबाउट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी, एज सिंपल एज दैट. But if you realize after answering a sentence or a couple of sentences, then you suddenly realize, then do not leave it there. You conclude it. Say that, sir, I think I misunderstood it and I'm going on the wrong track, sir. Kindly allow me a moment to correct myself or to revise or rephrase myself. There is no shame in it. ठीक है. और मान लीजिए ये तो रियलाइज हो गया है कि हम गलत है, लेकिन सही क्या है नहीं मालूम है, तब भी कह दीजिए, sir, I think I am not on the correct track, sir. This is I misguided myself on basic structure, sir. Kindly excuse me for the inconvenience. Finished there. But you cannot leave it like this, suspended. Okay, बोला कुछ और क्या, उसको सन्नाटा मार लिया. No. Then हाँ, ये ठीक है. ये तो आप बता ही दिए सर, जो पूछ रहे थे कि हाँ, इंटर रिलेशंस, कॉजैलिटी जो होती है ना, you should always, लॉ में कॉजैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट. You were saying again and again, you were harping on, sir gave you ample opportunities. Respected Oja sir asked you 3 or 4 times, would you like to change your answer? What is most important difference between Rajya Sabha and Lok Sabha? This question lingered for quite long. And in that, something should have clicked. Lok Sabha, sir told you about the functions and powers and authority and importance of Lok Sabha, because it can suspend the government, it can create the government, it can dissolve this and all that. Precisely because the Lok Sabha is directly elected. That is why so much importance has been given. So they are cause and effect. There is no contradiction in those two options. Option A, option B, option C, they are 3 facets of the same thing.
They are so because it is a house that is directly elected. तो वो कॉजालिटी वही है तीनों में. सो थोड़ा सा जो स्मार्टनेस है वो तब आएगी जब व्हेन यू विल बी कूल. यू नीड टू बी काम एंड कूल एंड पैसिफाइड. तब वो दिमाग काम करना शुरू करता है. इसके अतिरिक्त फाइन, आई थिंक दैट्स ओके. आई थिंक मेरिट्स पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं. दिस वर द एस्पेक्ट्स ऑन द ऑब्जर्वेशन of your presentation, how you presented yourself and where things could have been more smooth. तो वो ट्राई कर लीजिएगा. अगले बार जब हम मिलेंगे तो बेहतर रूप में आप मिलेंगे, ऐसा विश्वास है हमारा. बहुत अच्छा किया मेरी तरफ से. मैं बहुत I'll say कि I am very happy, very glad on your performance and take less time to realize where you are going on the wrong track and take more time before you start answering. That will help you. Thank you, sir, for the feedback. I'll Himanshu, definitely. Yes, sir. Himanshu, most of the good things has been told by the Shore. Let's see some of the defects of your presentation and interview. Yes, sir. First, you are not smiling. Why? You have a lot seriousness in your face, and it appears that you are nervous also and tense also. You see this recording after this class. I will post as early as possible. You see it. You find it. Yes, It doesn't need to be a smile. It's more than smile. We say there's some pleasantness. You should not feel that there is a lot of pressure. I'm nervous. I'm not going to perform. I'm counting time to go. You should avoid it. Second, you are not precise giving your answer. When I asked the basic structure, very precise answer was there. You took a lot of sentences to tell it, and that sentence also not able to explain it. Second, you did a blunder that you are not knowing that you have said my area of interest is the constitution. You are not aware in which case the first time the basic structure theory came. In which country the Pakistan first time in 1962 the theory of basic structure came, and it is a newspaper. The very much worrying part for me to all of you, despite that I am posting the newspaper to convince you, to persuade you, you are not reading the newspaper. I'm again telling you, you are spoiling your future if you're not reading the newspaper. It is a very incorrect proposition to conclude that PCS interview is only with respect to law. Where it is being written? Where is being written? And whatsoever coming in the legal field in the newspaper is not the law. I'm again repeating, you read a number of books, but whatsoever analysis is coming on the newspaper, you are not getting anywhere. The reason being, on a specific topic, a writer is writing with a lot of research, in which you are not privy. Even after so many years, I'm teaching you all, I always get a new point of view on the news item. And most of the time, I convinced my aspirants that whether they are forest service, the judicial service, IAS, you must see the newspaper. And they just need to read the newspaper. How you go for the PIL? How you go for judicial activism? They just need to have the nurse of the society. How you'll have? Second, I was very much disappointed by your answer about the Lok Sabha and Raj Sabha. And I'm trying to, first you try to understand what the examiner wanted to know. If you have given a wrong answer, what is the wrong to rectify it? You should not show the stubbornness. There is two issues. Issue number one, you should not change answer often. Issue number two, if you are thinking I am wrong, you should change it. You just read again after this class. Okay, there is two conclusions: the direct and indirect election, Raj Sabha, Lok Sabha, and formation of the government and the dissolution of the Lok Sabha, which is most important. Article 75(3), the cabinet is responsible to the Lok Sabha, is the most important part of the Lok Sabha. Rather than saying this, you are trying to emphasize again and again. You know, it is directly elected, that is indirectly. That is a procedural part. The direct election of the Lok Sabha and indirect election of Raj Sabha is a procedural part. It has no content. Content is something else. You are not able to understand the question. What the question was asking.
Therefore, you try to see it very carefully. One more thing, you listen. All aspirant need to listen question very carefully. I'm asking something else. If you are answering something else, examiner has no interest in you. Examiner has a limited time, 30-40 minutes for a one candidate. For you, it may be life and death. For him, it is a routine affair. Because he has to see the 800, 700 students to pass through, and he is doing his job. So it is your job to convince examiner to ask me good question. I will give you good answers. Therefore, you try to see this very carefully. And what's your area of interest? You need to say this. ये हमारा ये इंटरेस्ट है उसमें आप थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो था सीआरपीसी में बहुत अच्छा क्वेश्चन था आई वाज ट्राइंग टू ट्रैप यू बट यू scale through. I purposely not set the concurrent list because I'm knowing if you are guessing if you go or state list, but you have not gone. Otherwise, your interest is fine, but I think you need a bit more improvement. मेरे ख्याल से आज हम लोग बंद करते हैं. अगर हम 2 आदमी से ज्यादा का इंटरव्यू लेते हैं तो जस्टिस नहीं हो पाती कैंडिडेट के साथ. And we take a lot of interest in every mock. तो next tomorrow I will take one आलोक, दूसरा और किसका लेना है? Who else wants to give? क्या 2 घंटे के क्लास के बाद आप लोगों के पास भी अटेंशन स्पैन नहीं रहता और ग्रेस्पिंग पावर कम होने लगती है. तो 2 घंटे में लोग बंक कर देते हैं. तो आलोक आपका कर लेते हैं, ठीक बेटा? और कौन देना चाहता है? अनुज, एक तो आलोक का लेते हैं, एक किसी और का देख लो कौन लेना चाहता है. अच्छा, हाँ, अच्छा, इंटरव्यू क्लोज करते हैं. किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी आदमी को, किसी बॉय गर्ल को, किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोग 5-10 में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आपस में. विल क्लोज इट. सर जैसे मैंने LLM मेरा सर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ही था, दैट्स व्हाई आई पर्पसली सेड. बट वैसे सर मेरा ये था कि क्रिमिनल में मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसी वजह से मैंने टॉपिक भी इस तरह के लिए थे. और 5 ईयर लॉ में भी सर मेरा क्रिमिनल लॉ ऑनर्स ही था. देखो क्या है ना हिमांशु, इट इज ए वेरी इंडिविजुअल प्रेफरेंस कि व्हाट आंसर यू वांट टू गिव फॉर एरिया ऑफ चॉइस. Why I said constitution? One of the reason that in the constitution a lot articles are coming in the newspaper. You can handle by newspaper also. और कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल पूछने की संभावना रहती है. अगर आपको क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट वो भी दे दो, आप 2 बोल दो ना. सॉरी तो कुछ कहा ही ना कि आप 2 बोल दो, देयर इज नो इशू, यू कैन यूज टू, नो इशू एट ऑल. या फिर सुनिए, आपका क्या था सवाल? यस सर, गुड इवनिंग सर. अपना ऑन करो के वीडियो, हर आदमी वीडियो ऑन करके बात करो. यस सर, गुड इवनिंग सर. Sir, my question is that if they will ask a question about a Jyoti Maurya incident, then as a girl, what would I answer it? If they will ask that, what is your opinion about this? तो ज्योति मौर्य के बारे में जितना सोशल मीडिया में अवेलेबल मटीरियल है उसमें कोई सवाल ऐसा बनता नहीं है. क्यों नहीं बनता है? ज्योति मौर्य ने एक अनइथिकल काम किया, ठीक है ना, कि उसका किसी अफेयर हुआ, फिर उसने अपने पति को मारने की कोशिश की. तो इफ अगर उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो क्या सवाल बनता है? टेल मी व्हाट क्वेश्चन में भी आस्क. कोई ऐसा सवाल नहीं बनता है. बताओ क्या सवाल बनेगा भाई? ज्योति मौर्य जो सिंपल सा इशू है कि ज्योति मौर्य का एक आदमी से अफेयर हुआ, ठीक है ना, उसके पति का उसमें ऑब्जेक्शन हुआ. ज्योति मौर्य अपने पति को मारना चाहती थी, यही ना मोटा मोटी सोशल मीडिया नहीं है. अब इसमें ज्योति मौर्य के पक्ष में बोलने कुछ है नहीं. ज्योति मौर्य चली गई है न्यायालय में, अपने पति से डाइवोर्स न्यायालय में. आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द ज्योति मौर्य. अगर कोई सवाल बनता है आप बताइए, हम लोग आंसर करेंगे. सर इसमें जो चैट लीक हुए थे और सर ये जो जैसे डायरी, तो ये सर प्राइवेसी का इसमें ब्रीच नहीं बनेगा हस्बैंड वाइफ में सर? तो कैसे क्या ब्रीच होता है? इससे क्या प्राइवेसी? नहीं सर, मतलब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें ये जैसे एविडेंस में है भी कि हस्बैंड वाइफ का अगर ड्यूरिंग मैरिज है तो वो जो कन्वर्सेशन है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता, पर अगर उसने डिस्क्लोज किया है तो क्या ये सर ब्रीच का नहीं बनेगा? अगर आलोक ने उसको अगर कर दिया तो उसमें एथिकल इशू, लीगल इशू क्या है उसमें? लीगल इशू क्या था उसमें? Wrong, I think it is. Sir, it is socially wrong. What socially wrong? Sir, can I speak in Hindi? हाँ, हिंदी में किसी भाषा में जो जिस भाषा में जिसको बोलना उसी में आप बोलो, जिसमें इंटरव्यू आपको देना है. जैसे एक
लोअर पोस्ट के उसका हस्बैंड होने के नाते उन्होंने इतनी कोशिश से उनको पढ़ाया, उनको अपनी ज्यादा मतलब पोस्ट पे एसडीएम वो बनी है। उसके बाद सर अगर ये होता है और पूरा ये सोशली पूरा इंडिया में मतलब ये न्यूज फैल गई है, तो इस चीज से रिलेटेड मैं पूछना चाहती थी कि क्या अगर वो पूछें कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, तो आप क्या बोलेंगे सर? तो यही बस क्वेश्चन था मेरा, क्या ये सोशली रॉन्ग है या जो सोशली रॉन्ग तो वही है ना, जो ज्योति मौर्य ने किया वो तो सोशली रॉन्ग ही है ना यार। What is wrong. जो गलत है सो गलत है। लेकिन सर मतलब अगर हम जेंडर न्यूट्रल होके सोचें तो सर ऐसे तो बहुत सारे मैन हैं जो ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसे करते आए हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज कभी खुलती नहीं है या मतलब आवाज नहीं उठाई बेटा आप जाती है। स्पेसिफिक मैटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसे जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो नाउ यू आर क्या टॉकिंग है, अबाउट जैसे क्या है, इस पे कोई सवाल बनता ही नहीं है। जो पहला सवाल क्या है, ज्योति मौर्य ने ठीक किया नहीं है, अपने पति को मारना चाह, जो न्यूज आइटम पे पढ़ रहे हैं, तो इस पे अगर आप बोले, अब आप इसमें वुमेन एक्टिविस्ट को भी सपोर्ट नहीं कर सकते ना उसको। दूसरी बात है, चैट लीक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो इंडिविजुअल मामला है उनका, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो अब आप इसको हाँ सब चैट लीक नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। इसमें अनइथिकल इशू ज्यादा है, लॉ का इशू कम है इसमें। सर एक चीज इनको बताना चाह रहे हैं, यदि दो फंडामेंटल राइट्स के बीच में यदि कंफ्लिक्ट होता है तो कौन सा फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा? सर नो फंडामेंटल राइट के बीच में हाँ, सर सोशल इंटरेस्ट, जिसपे सोशल इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करेगा, सिंपल सी बात है। XZ हॉस्पिटल की बात करिए तो राइट टू प्राइवेसी है और वहां पे उसकी लाइफ की बात है, ठीक है, राइट टू लाइफ के बाद है और दूसरा जो है राइट टू प्राइवेसी है, विच वन विल प्रिवेल? सर राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी, in my opinion sir, a right to privacy will be prevail. अरे कैसे? राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी कैसे कर जाएगा? राइट टू लाइफ तो सब थोड़ा है। जी सर, सॉरी सर। बेटा राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी आती है ना, अंडर आर्टिकल 21, तो प्रिवेल करेगा। आज आप फर्स्ट आए हो क्या प्रियदर्शी? कल आप नहीं आए थे? नो सर, I was in class but I did not answer. अच्छा सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलो। बिटिया आपने जो शुरू किया सवाल अपना, उसमें कहा कि एज ए गर्ल अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। तो पहली बात तो एज ए गर्ल आपको जवाब नहीं देना है। आपके क्वेश्चन का आंसर जो है शुरू कर देते हैं। पहला आंसर ये है कि एज ए गर्ल कोई आंसर नहीं देना है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू आर अ गर्ल, वो कहे सवाल में तो भी एज ए गर्ल आप क्या कहें, इसका आप पर क्या कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एज ए गर्ल जवाब नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, यू शुड नो कि अगर कोई लीगल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट है तो वो कोर्ट के सब्जेक्टिस है और वो डिसाइड होगा, ठीक है। नंबर 3, एज ए जज इफ यू आर प्रिसाइडिंग ओवर अ केस और द ट्रायल ऑफ अ केस, then you cannot allow yourself to be influenced by what is going on in social media or in newspaper. This is the fundamental canon of being unbiased. तो ये न्यूज रिपोर्ट ये फलाना इससे कुछ नहीं होता। जो लॉ एंड ऑर्डर में एविडेंस के बेस्ड पे जो डिसीजन होगा वो होगा कि कौन सा चीज सही था कौन सा गलत था, ठीक है। जहां तक किसी ने बोला प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, आई डू नॉट सी टू बी सैंपल केस फॉर प्रिविलेज कम्युनिकेशन, वो दूसरा ही चीज है। हस्बैंड वाइफ के ही बीच में अगर बवाल हो गया है तो वो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला चीज था वो दैट डजंट मेक सेंस हियर। Exactly sir. Correct me if I'm missing something, isn't it sir? एक बड़ा ओल्ड केस है जिसमें एक आदमी, आपने लॉ पढ़ा, एक आदमी को मारा गया था, उसके नाभि में कीड़े भर के मार दिए गए थे। जब वो मामला, आप लोग पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, जब ये मामला जज के पास आया तो जज ने लिखते समय यही स्टार्ट किया था कि ये बहुत हीनस क्राइम किया गया, लेकिन मैं हीनस क्राइम को अपने दिमाग से हटा के मैं साक्ष्य के आधार पे फैसला देना चाहता हूँ। जब भी कभी जज का सिलेक्शन होता है हाई कोर्ट में, वो चेक करते हैं ये आदमी इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल डिसबैलेंस। अगर आपके दिमाग में है कि आई विल आंसर एज ए गर्ल चाइल्ड, एज ए हैंडीकैप पर्सन, एज ए शेड्यूल कास्ट, एज ओबीसी, एज मुस्लिम, देन यू आर इमोशनली नॉट बैलेंस्ड। तो आप कोई भी आंसर करो उसमें गर्ल बॉय का चक्कर नहीं लाने का, सीधा आप एक निष्पक्ष की भूमिका के रूप में आप बात करने की कोशिश करो। तो अगर आपसे कोई सवाल करते हैं, अगर बोलते हैं एक लड़की की तरह आप बोलो, तो भी आप बोलो कि सर मैं इसको निष्पक्ष की तरह बात करती हूँ। And what are your sources of information about the case? Tell me.
हमारे आपके पास जो सूचना का स्रोत क्या है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही तो है। Yes, sir. So this case has to pass through the judicial scrutiny by way of marshalling of facts and evidences ना भाई, हम उसके बारे में जानते ही नहीं, उनके बीच का पूरा स्टोरी, पूरी पिक्चर क्या है, you cannot judge it right now. अच्छा, अननेसेसरी वुमेन एक्टिविस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि हम इसको महिला के चश्मे से देखेंगे या हम इसको एक लड़की की तरह देखेंगे। नहीं, आप एक न्याय के पक्ष में हैं। I would like to say, sir, this is your personal interest, personal choice. ऐसा भी नहीं कहना है कि व्हाट, आप देखिए एकदम टेक्निकली, बहुत टेक्निकल, हाइपर टेक्निकल भी नहीं होना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये नहीं कहना है कि अब जो भी है उनका मैटर है, हमसे क्या मतलब। डोंट एस्केप इट, डोंट एस्केप इट। विदेशी का शब्दों का चुनाव बहुत संभाल के करो। मैं हमेशा ये मानता हूं कि इस इंटरव्यू में जो आपकी एक्सप्रेशन पावर है बहुत जबरदस्त काम करती है। एक सिंपल सी बात को ही कहने में आप कैसे कहते हो। जैसे अभी हिमांशु वर्मा कह ठीक रहे थे, लेकिन वो चीजों को लंबा ले जा रहे थे, तो हमने जो उसको सलाह किया कि आप प्रिसाइज हो जाओ, कंसाइज हो जाओ। आप कई बार बहुत सी सामान्य सी चीजों को भी आप बहुत लंबा ले जाते हो, तो आप कहते समय शब्दों के चुनाव में बहुत, और कम शब्दों में बात कहना एक कला है। अब इस समय तो इस बैच में आप लोग शायद काम नहीं हो सकता, अगर आप लोग कुछ लंबा 2-3-4 में हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग जरूर काम करेंगे। अभी जितना समय उसमें कोशिश करते हैं, तो शब्दों का चुनाव, बोलने की कला हर आदमी को सीखनी चाहिए। हम लोग एज ए इंटरव्यूअर इसको सीखने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। कितना सीख पाए हैं ये तो आप लोग आंसर कर पाओगे, लेकिन हम लोगों का लगातार प्रयास खुद भी रहता है कि हम अपने को अगर इम्प्रूव करें तभी तो आपको इम्प्रूव कर पाएंगे ना। आई थिंक हमने आपका सवाल का जवाब दे दिया। सर एक प्रेयर थी मेरी सर। हाँ हाँ, आलोक से सर 5-5 सवाल हम तीनों पूछ लें सर। ही हैज कम प्रिपेयर्ड सर। मेरे पहले भी मन में आ रहा था, फिर अभी मैसेज में भी देखा सर। सो इट आलोक, अगर इफ यू आर स्टिल देयर तो बताइए आलोक भाई, अगर आप अभी भी हैं तो बताइए, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर फीडबैक। सर मैं हूँ, लेकिन मुझे 2 मिनट का मौका दे, मैं तैयार हो जाऊँ। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। तब से और आपकी और बात करते हैं क्या प्रदर्शन। Yes, sir. Meanwhile, एक पॉइंट और है बिफोर वी प्रोसीड, एक चीज और नोट कर लेना। माय ओपिनियन दैट द जज कैन नॉट अलाउ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ओपिनियन। इसका यह अर्थ नहीं है कि द जज शुड नॉट बी सेंसिटिव टू द सोशल रियलिटीज। वो है, वो जो है वो है, बट प्लीज टेल मी, if you said that it is socially wrong, the judge is supposed to factor it into the case only when it raises a question of fact or question of law there. Unless that does it, उसका jurisdiction ही नहीं है उस पर एडजुडिकेट करने का ना। सोशल रॉन्ग अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और ट्रायल में किसी तरह से फैक्ट का या ओपिनियन का क्वेश्चन बन के आता है, तभी उस पर अपना ओपिनियन करेगा ना, अदरवाइज जजमेंट परवर्स हो जाएगा ना। इट इज कॉल्ड परवर्सिटी। When the judgment is based on irrelevant facts and not on relevant facts, then becomes perverse. वो एक हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने मुझको बुलाया नाश्ते पे। उन्होंने टाइम दिया 8 बजे का। मैंने बोला कि सर पहले आते हैं। बोला नहीं, मैं 6:30 से 8 तक सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैंने पूछा सर क्यों बोलते हैं? बोला अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें हमको पता कैसे चले समाज में क्या चल रहा है। बोला हमको समाज को जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि समाज को बगैर समझे आप एक बेहतर जज नहीं बन सकते हैं। अगर मैं पीसीएस के इंटरव्यू बोर्ड में बैठूं तो मैं आपके लॉ से ज्यादा मैं आपके इस बात पर जोर दूं कि आपने कितना समाज को समझा है, कितना आप सामाजिक घटनाओं को जानते हो, कितनी समसामयिक घटनाओं को जानते हो। आपकी विश्लेषण क्षमता जो है आपके लॉ के कहते हैं एक्ट में बताने से नहीं होगी। मैं किसी भी एस्पायरेंट को उसकी विशेष क्षमता पे आता हूँ, और यूपीएससी में ये बहुत होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, लेकिन क्या है पीसीएस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाई गई है कि नहीं आप सिर्फ लॉ पढ़ो, ऐसा थोड़ी होता है यार। दूसरा लॉ भी क्या पढ़ो, लॉ का एनालिसिस पार्ट। इफ यू सी द क्वेश्चंस व्हिच वी आर आस्किंग, हम लोग लॉ का सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लॉ का हम एग्जैक्ट, हमको सेक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम उसकी एनालिसिस पूछ रहे हैं, उसका इम्प्लीकेशन पूछ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। और आप देखना इंटरव्यू में यही होगा। अगर इंटरव्यू आप देखेंगे तो जो हार्डकोर लॉ टाइप का है ना, जहाँ पे आर्टिकल पूछा जाए, प्रोविजन पूछा जाए, वो 20% होगा, 80% ऐसे ही होगा। आप लॉ तैयार करो, लॉ तो तैयार करो ही करो, कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं हो, तो करना ही आपको। वो आपका तो कोर डोमेन है, कोर एरिया है।
लेकिन हम आपको और देखिए आपका 2 4 5 नंबर बढ़ कैसे सकता है? आपका सारा झगड़ा 5 7 नंबर का ही है ना। जो सिलेक्ट होगा, जो रिजेक्ट होगा, 7 8 10 नंबर का फर्क है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। 7 8 10 नंबर कैसे बढ़ाया जाए? आप लोग और एस्पायरेंट से बेहतर कैसे हो? आप जो 24 25 आदमी हमारे पास आए हो, वो 24 25 आदमी सिलेक्ट हो जाओ, कैसे हो सकते हो? हम आपका 8 10 नंबर उन लोगों से बढ़ा दें जो हमारे पास नहीं है, यही तो होगा ना फर्क। उसके लिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपको हम मोल्ड करें, चेंज करें। यस आलोक, यस सर। सर थैंक यस यू। सर, आई एम रेडी। आलोक भाई, पहली चीज जो मैं अपने इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, बिकॉज आई कैन टेक दिस लिबर्टी, आई हैव नॉट जज्ड यू एज येट। हमको लगता है कि आपको पैर हिलाने का आदत है? सर है तो नर्वस नहीं, हो? लेकिन आज पहली नोटिस बार करते हुआ। हो कि नर्वस हो तो हिल जाता है पैर? सर है तो नहीं, लेकिन आज पहली बार हुआ है। हाँ, चलो तो पहली बार ही पकड़ गया, अच्छा हुआ। ठीक है। ऐसा आपका ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्या है ना, आप ध्यान देना, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो मूव कर रहा है, ध्यान देना आप। जी हाँ जब हाँ। वीडियो, हम लोग रिकॉर्डिंग इसीलिए करते हैं कि आप लोग उसको देखो। आप लोग सारे लोग, जिसका जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग देखो। अपना तो आप देखना ही देखना, और का देखो, उसकी कमियों को देखो, आप में है तो नहीं। देखो आप लोग एक ही उम्र के लड़के लड़कियां हो, तो जो पर्सनालिटी आपकी कमोबेश एक ही तरह की है। तो आप देखो, जो एक्स में कमी है वाई में तो नहीं है। हाँ, चल हाँ, यस सर, स्टार्ट। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम आलोक पांडे है, और मैंने अपनी बी एल एल बी और LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से की हुई है। 2022 में कंप्लीट किया LLM, और रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम दिया UPJ का, और अभी मैं यहाँ हूँ। ठीक है, ठीक है। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में भी बताइए हमको। पिताजी मेरे पेशे से किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं, और बस। और आपके भाई बहन वो परिवार में होंगे? सॉरी 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 सर, बहन है, पढ़ रही है, इस समय वो ग्रेजुएशन कर रही है। ओके, ओके। तो आप और आपकी बहन, दो संतानें हुई जी आपके माता पिता की? जी जी। ओके, ठीक है। डिफेमेशन शब्द का नाम सुना होगा आपने? जी हाँ। डिफेमेशन, जी हाँ। तो वो क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी कहीं ना जी कहीं पड़ता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सर, मैं मानहानि, जस्ट इन केस कहीं कोई गेस मिसकम्युनिकेशन नहीं हो जाए, गेस कर मानहानि। सकते हैं हम। जी जी। क्रिमिनल में सर बेसिकली इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, और सिविल में इंटेंशन हो या ना हो, डिफेमेशन। बेसिक अंतर यही समझ में आ रहा है सर। ओके। दूसरी बात, न्यायिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर समझते हैं आप? सर न्यायिक अधिकार में आपके हर वो अधिकार आ सकते हैं जो कानून के द्वारा प्रदत्त किए गए हों। संवैधानिक अधिकार में आपके वही अधिकार होंगे जो संविधान में वर्णित हैं या संविधान के द्वारा दिए गए हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई अधिकार संवैधानिक अधिकार रहा हो और फिर उसे न्यायिक अधिकार में वर्गीकृत कर दिया गया हो? सर संवैधानिक नहीं, बल्कि ये फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, जिसे तो जो फंडामेंटल राइट मौलिक से हटा। अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार नहीं हुआ? नहीं, अभी संवैधानिक है, उसको मौलिक अधिकार से हटा के संवैधानिक किया गया। और सर जो आप पूछ रहे हैं सर, उसका उसकी जानकारी नहीं है सर। संवैधानिक किया गया या उसे उसे मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक किया गया, ये एक आपने बताया। क्या जी। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी संवैधानिक अधिकार को न्यायिक अधिकार में बदल दिया जाए? संवैधानिक अधिकार को न्यायिक अधिकार में बिल्कुल सर हो सकता है, ओके। थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल किया जा सकता है, नया लेजिस्लेशन लाके और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल अमेंड। राइट को जी फंडामेंटल राइट को, मूलभूत अधिकार को, मौलिक अधिकार को भी न्यायिक अधिकार में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? सर, सारे फंडामेंटल राइट को तो नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिक्लेयर किए गए या भविष्य में नहीं किए जाएंगे, उनको छोड़कर बाकी को किया जा सकता है।
और बाकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है भी। महिलाओं का जो आरक्षण है, महिलाओं जी को जो आरक्षण मिलता है, उस विषय में आपका आपका क्या विचार है? आप उसका कैसे स्वागत करते हैं? आप उसे अच्छा मानते हैं? बिल्कुल सर, महिलाओं को अगर हम ध्यान दें तो कई सारे क्षेत्र में हम उन्हें क्या कहते हैं, पीछे छोड़ते हैं किसी न किसी वजह से, और उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वो किसी न किसी पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से, या और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह गई हैं। उनको प्रमोशन की ज़रूरत है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है, और उनको बराबर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में महिला पुरुष लगभग बराबर हैं। एक आगे बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, दोनों को बढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई नियम आप जानते हैं कि यदि किसी महिला के ऊपर कोई यौन शोषण हुआ है और उसके संदर्भ में हुआ है, या ऐसा आरोप लगाया गया है और ऐसा ये केस चल रहा है, मामला जो है न्यायाधीन है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर विशेष के जो मामलों में जो है वो जज भी महिला ही होनी चाहिए, ऐसा कहीं कुछ सुना है आपने? सर एक तो सर गेस कर सकते हैं, बहुत करिए, कोशिश अच्छे करिए। श्योर श्योर नहीं है सर। जो भी विमेन से रिलेटेड लॉज हैं, जैसे पॉक्सो हो गया, वो मतलब चिल्ड्रंस है फिलहाल वो तो पॉक्सो में अगर विमेन विक्टिम है, लड़की गर्ल विक्टिम है, तो प्रोबेबली सर जज को होना चाहिए। अगर वो सेक्सुअल ऑफेंसेस है तो जज को विमेन होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोविजन है शायद। ओके। क्या यह बात सही है आपके हिसाब से? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी जो चल रहा है, जो न्याय जी प्रक्रिया चल रही है, उसके समक्ष अचानक से पिछले 10 15 20 सालों में आप देखेंगे कि यौन शोषण के मामले और इस तरह के बलात्कार के जो आरोप हैं, उस तरह के केस जो है बहुत तेजी से बढ़े हैं। और उसका कई बार यह कारण बताया जाता है कि नहीं, घटनाएं उतना नहीं बढ़ी हैं जितना रिपोर्टिंग बढ़ी है। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? सर, आपकी बात सर सही है, रिपोर्टिंग तो बढ़ी है सर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, लोगों की जागरूकता, और लॉ इन्फोर्स कराने की लोगों की पावर, विमेन एम्पावरमेंट, और ये सारी चीज़ों, और इंटरनेट की सुविधा या नॉलेज की इन्हांसमेंट लोगों का, तो ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर की है, और इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग बढ़ी हुई है। और पहले से लोग जो कंजर्वेटिव ज़्यादातर हुआ करते थे, थोड़ा थोड़ा वो लिबरल हो रहे हैं और चीज़ों को सामने ला रहे हैं। ओके। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का नाम सुना है आपने कहीं? जी सर, जी सर। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक डॉक्ट्रिन है जिसको बेसिकली कई सारे केसेस में किया गया, लाया गया। और उसमें से एक केस है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन स्टेब्लिश करते हुए कहा कि कोई एक दूसरे को ऊपर प्रिवेल नहीं करेंगी, कोई किसी को एक को वरीयता नहीं दी जाएगी। इसमें कोर्ट का ये दायित्व तो बनता है कि वो चीज़ों को हारमोनियस ले, क्योंकि दोनों का एंड जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सर्विस के पर्पज से ही है। और एक को आगे करके दूसरे को पीछे करके हम वो एंड अचीव नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब से जज में कौन सी 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए? कोई भी 3। सर, मेरे हिसाब से मुख्यतः 3 क्वालिटियों में, एक तो जज का सबसे बड़ा पहला ईमानदार होना चाहिए, और दूसरा मैं समझता हूँ न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और तीसरा कंपैशनेट भी होना जरूरी है। एम्पथी होनी चाहिए, आपका कहना है? हाँ, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए। जी अपना निष्पक्ष आकलन करें यदि आप, तो आप में ये तीनों गुण विद्यमान हैं उस स्तर के? सर, कुछ हद तक तो जरूर है, और कुछ हद तक सर हम उसको डेवलप कर रहे हैं दिन प्रतिदिन अपने आप को उस
वैसा सोच के कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना होगा। तो सर मैं जो है बाकी मैं डेवलप कर रहा हूँ सर, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। एक और प्रश्न मैं पूछूंगा कि जो इस समय की जो न्याय व्यवस्था है, मूल रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका संचालन है, उसका सुधार करने के लिए कोई दो चार सुझाव जो आप समझते हो कि ये तो होना ही चाहिए। सर अभी आज ही रिसेंट में के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि जो जजेस जो हैं एक साथ छुट्टी लेते हैं, वैकेशन पे जाते हैं एक साथ, उसके लिए सुझाव लॉ कमीशन ने वो अपने कई सारे चीफ जस्टिस जो पुराने रह चुके हैं उन्होंने भी दिया है कि एक साथ छुट्टी ना लेके मतलब बीच बीच में सब लोग लें छुट्टी, तो जो लगातार एक कुछ समय के लिए लगातार वैकेंसी बनी रहती है और लोग लोग इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, उससे दूर हुआ जा सकता है और पेंडेंसी ऑफ केसेस को कुछ हद तक निपटाया भी जा सकता है। और दूसरा सुझाव विमेन रिप्रेजेंटेशन से रहेगा मेरा, कि एक विमेन अप्रोच भी जरूर जुडिशरी में दिखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी 50% आबादी है। और तीसरा सुझाव, फास्ट ट्रायल पे जरूर फोकस करना चाहिए, जो केसेस बहुत सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं और लोग न्याय के लिए काफी हद तक परेशान रहते हैं और न्याय मिलने पे भी वो न्याय नहीं रह जाता है, लेट से मिला हुआ न्याय। फाइन, आई विल हैंड ओवर टू अनुज सर नाउ। आलोक, मुझे 3 ऐसे लॉ बताइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सर एक तो एविडेंस है पहला, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा टीपीए। तीनों में से एक में पूछना हो तो किसमें से पूछूं? सर किसी में से पूछिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? जी जी। सॉरी सर, एक मिनट कुछ सेकंड लेना चाहेंगे। सर कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, जो हम अपने मस्तिष्क में ही खाली उसे सोच के रखते हैं, या जान हमारा मस्तिष्क ही उसके लिए कॉन्शियस होता है, बाहर वो रिवील नहीं करते हैं अपने किसी के, तो मतलब शब्दों से या किसी और रिप्रेजेंटेशन से, वो तथ्य हमारे हिसाब से मनोवैज्ञानिक तथ्य। कोई एग्जांपल बताइए साइकोलॉजिकल फैक्ट। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ किसी के बारे में, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है शायद। यानी ओपिनियन क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है या नहीं है? किसी के बारे में मेरी जो ओपिनियन है, यस सर। सर ओपिनियन तो एक एक्सप्रेस्ड फैक्ट हो गया, और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। सही है सर, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है और एक्सप्रेस भी हो गया। नहीं, मैंने वो एक्सप्रेस नहीं किया, हमने आपके बारे में एक धारणा बना रखी है, अभी एक्सप्रेशन नहीं किया, वेदर इट इज अ साइकोलॉजिकल सर फैक्ट। यस सर, सर श्योर सर, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल है। यस सर। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल बताएं जो मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट को शो करते हो। जैसे किसी अपराध में किसी अपराधी का संलिप्तता के समय उसका मानसिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसने रिवेंज के पर्पज से वो अपराध किया है, या उसके पीछे उसका मोटिव कुछ और है। चलिए, मोटिव और कॉज में क्या फर्क है? सर कॉज एक, सर कॉज क्या,
कॉज और मोटिव दोनों रिलेवेंट फैक्ट है इंडियन हेतु एविडेंस। और हेतु जी दोनों में क्या अंतर है? सर, कुछ मैं मोमेंट लेना चाहूंगा। ओके, सर, उसे कहते हैं जब हम किसी पर्पज से कोई काम करते हैं, और सर कॉज कॉज पीछे से वो काम करने के लिए चलिए, हमें क्रिमिनल लॉ में मोटिव का रूल क्या है? सर, क्रिमिनल लॉ में मोटिव एज ए रिलेवेंट फैक्ट प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर सर सोल लाइबिलिटी डिपेंड नहीं करती सर। सेक्शन 8 में मोटिव रिलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और वो प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन उस बेसिस पे लाइबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी। क्या एफ आई आर जो है, एफ आई आर सर जो है वो यदि एक्यूज के द्वारा लॉन्च की जाती है तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी? सर पहली एविडेंशियरी वैल्यू तो सेक्शन 6 में फॉल करेगी। सेक्शन 6 जो बात करता है फॉर्मिंग द सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसा कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय केस में कोर्ट ने हिल्ड किया था कि जब जब वो विक्टिम की बहन दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गई। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गया। क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट वुड बी द एविडेंसरी वैल्यू व्हेन द एफ आई आर इज लॉन्च्ड बाय एक्यूज्ड हिमसेल्फ? ये फाइल, पार्डन सर। एक पुलिस ऑफिसर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है और उसने उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लिया है जी और उसने चार्जशीट फाइल कर दी, उस पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और आगे इंक्वायरी और ट्रायल इनिशिएट हो गई है और एक्यूज का कन्विक्शन हो गया एंड फाइनली इट वाज चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। तो क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है कि ऐसे अन्वेषण अधिकारी के पास अन्वेषण की अधिकारिता नहीं थी क्या? सर, एक शर्त पे चैलेंज किया जा सकता है। यदि उस जजमेंट को उस जजमेंट को पास करते समय इंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट हुआ हो, तो तो जाहिर ही ये चैलेंज किया जा सकता है। अन्यथा सीआरपीसी में प्रोविजन है कि सेक्शन 400 पास 62 या समथिंग उसके आसपास सर, सॉरी, उसमें है प्रोविजन की जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे, मात्र जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे जजमेंट को या डिक्री को या किसी ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए, मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मुझे यह अपीयर होता है कि मैंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसका मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं जी और फाइनली जब कंक्लूड करता हूं इन्वेस्टिगेशन तो मुझे पता चला कि ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है जी और मैंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है मजिस्ट्रेट के सामने। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दिस रिपोर्ट? वेदर दिस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ पुलिस रिपोर्ट और अ कंप्लेंट? जी सर। सर, जैसा कि सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन में कि ऐसी स्थिति के बारे में डील करता है कि ऐसी स्थिति होगी तो वो कंप्लेंट माना जाएगा, ना कि पुलिस रिपोर्ट। यदि कोई पुलिस ऑफिसर जो है एफ आई आर लॉन्च करने से डिनाई करता है जी तो क्या रेमेडीज हैं इन्फॉर्मेंट के पास? जी सर। सर, बेसिकली 3 रेमेडीज हो सकती हैं। पहला तो वो पुलिस ऑफिसर के हायर अथॉरिटी पे जाके उनको पोस्ट करे या खुद वो जाके हायर अथॉरिटी कौन है? एसपी सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, को ओके, पोस्ट के जरिए या स्वयं जाकर उनको अपना एप्लीकेशन दे, और वो खुद चाहे अन्वेषण करवा सकते हैं या किसी के द्वारा करवाएंगे। दूसरा ये हो सकता है सर, 156 के 3 में
मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है एप्लीकेशन लगाने पे कि FIR दर्ज की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और तीसरा सर, हम कंप्लेंट के रूप में भी अपने केस को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं, जहाँ पे FIR दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और प्रोसीजर और जजमेंट हम प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं? और सर गेस करूंगा वो 482 में इनहेरेंट पावर में शायद ऑर्डर कर सकती है हाई कोर्ट लॉन्च करने के लिए FIR। ऑकरेंस रिपोर्ट क्या होती है? जी सर 157 CRPC डील करता है इसके बारे में। जब कभी भी कोई घटना होती है और पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन करे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे, वह वहाँ पे जाने के बाद, सॉरी सर, जैसा ही रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, तुरंत पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी और लायबिलिटी होती है कि वह मजिस्ट्रेट को केस के बारे में तुरंत सूचित करे, उसके बाद तुरंत जाके कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होते हैं? जी सर, ऑस्टेंसिबल ओनर ऐसे ओनर होते हैं जो कि उस संपत्ति का प्रतिफल खुद नहीं देते हैं, किसी दूसरे के द्वारा वो प्रतिफल दिया जाता है। उन्हें हम ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। सेक्शन 41 डील करता है इसके बारे में। सेक्शन 41 ऑफ द TPA, जो जो कि कहता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा, अगर ऑस्टेंसिबल ओनर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रियल ओनर के कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है और डील कर रहा है, उसके बाद वो सेल कर देता है, तो रियल ओनर कभी ऑस्टेंसिबल ओनर को चैलेंज नहीं करेगा कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच दी। फैक्ट इन इशू और मैटर इन इशू में कोई फर्क है? सर फैक्ट इन इशू बेसिकली एविडेंस में यूज किया जाता है और मैटर इन इशू CPC में यूज किया जाता है, और मोटा मोटी सर कोई फर्क नहीं है सर। फैक्ट इन इशू क्या है? ऐसे फैक्ट अथवा या तो स्वयं से या कुछ फैक्टों के साथ देखे जाने पे किसी लाइबिलिटी डिसेबिलिटी के नेचर एक्सटेंट को डिसाइड करते हों, वो फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट के। सर्वाइवरशिप का कोई कॉन्सेप्ट है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में? ऐसी कोई सर्वाइवर सेक्शन है जो सर्वाइवरशिप के बारे में बात करती है? सर बेसिकली सर्वाइवरशिप तो हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ है यस। मैंने, और एविडेंस में सर याद नहीं आ रहा है अभी। ओके। पोजीशन इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप। जी ऐसा एविडेंस में कहीं है? जी सर, सेक्शन 110 इसके बारे में डील करता है। बेस कहता है कि पोजेशन इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप, जिसमें पोजेशन को 9 पार्ट ऑफ द ओनरशिप माना जाता है। जो व्यक्ति अ, सामान किसी वस्तु या जगह के कब्जे में मुझे रहेगा। 3 ऐसे सेक्शन बताइए एविडेंस में जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होते हैं। जी सर, सबसे पहला सेक्शन 105, जो कि अक्यूज को कोर्ट को ये बताता है कि ये ड्यूटी जो है, इस एक जनरल एक्सेप्शन प्रूव करने की ड्यूटी अक्यूज की होगी। पहला एक्सेप्शन। और सर कॉल आ गया था, सॉरी सर। चलो ओके। आप तो आप कॉल और बंद करके बैठा करो।
इट्स नॉट फेयर। सॉरी सर, वो बंद अगली बार से ध्यान देंगे सर। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू सर। ये बताओ, ये आलोक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आईपीसी में, वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। ये क्या है ये? पार्डन सर, सुन नहीं पाया एक ऑफेंसेस बार। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडियन पेनल कोड में, जी जी क्रिमिनल लॉ में। जी ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ क्या है ये? सर, इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस आते हैं, जैसे फूड एडल्ट्रेटेड फूड बेचना, और अ, लापरवाही से गाड़ी चलाना, अ, ये क्यों और ऑफेंस बनाया गया है? सर पब्लिक के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, ताकि कोई ब्रीच ना करे उनकी हेल्थ पे। तो क्या इससे इंश्योर हो पा रहा है? अभी तक कितने केसेस हुए हैं इस तरह के? आपने कोई केस पर देखा है? अभी कोई केस देखा आपने? कोई आपने केस देखा है, सुना है? सर, पढ़ते हुए तो जरूर पढ़ा हुआ है, लेकिन सर अभी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। एक फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल की बहुत बात चल रही है, आपने सुना इसको? जी सर, सुना हुआ है। क्या है ये? सर, रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है इस पे, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल पे। इसमें सर कंजर्वेशन कंजर्वेशन को लेके कुछ बातें की गई हैं, फॉरेस्ट के सस्टेनेबिलिटी को। सर एग्जैक्टली प्रोविजन नहीं याद है अभी। एक डेटा प्राइवेसी बिल बहुत डिस्कस हो रहा है, क्या है? सर ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है, और अभी बिल पेश किया गया है। क्या है ये? और प्रोटेक्स इसमें डाटा की प्रोटेक्शन पे आज पढ़ा है इसको प्रोविजन आपने? है। सर प्रोविजन अभी अच्छे से याद नहीं है सर। इसको मैंने 3 बार पोस्ट किया है चैट पे। आप पढ़ते नहीं हो चैट को? सॉरी सर, चैट देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाए? कौन जिम्मेदार होगा उसका? हम्म? जो ये विधान परिषद बनती है, इसकी क्या जरूरत है? सर बेसिकली ये दूसरे हाउस पे एक चेक है, जिसके थ्रू वो चेक लगाता है 22 कि। राज्य, आपके जितने राज्य हैं तो 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बाकी में तो है नहीं। तो 6 में ही चेक की जरूरत है, बाकी में चेक की जरूरत नहीं है। सर ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, कौन सा स्टेट चाहता है कि मेरे यहाँ विधान परिषद हो, कौन सा नहीं चाहता विधान है वो। परिषद बनाता, विधान परिषद कौन बनाता है? सर स्टेट रेजोल्यूशन, स्टेट अप्रूवल देता है, उसके बाद सर पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट ने बनाना चाहे तो? इससे रेजोल्यूशन दे दिया, पार्लियामेंट ने बनाना चाहती तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? पार्डन सर, इसके बारे में सर नहीं आइडिया। आपने कहा कि विधान परिषद जो है चेक रखती है विधानसभा में, ऐसी कोई पावर तो विधान परिषद के पास है नहीं चेक रख ले। ऐसी बताओ क्या पावर है? सर कोई भी बिल कानून तभी बनता है जब दोनों सदन से पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है उस पे। प्रेसिडेंट का तो विधान परिषद से क्या मतलब है? सर विधान परिषद के अप्रूवल के बिना मनी बिल को छोड़ दिया जाए, और कुछ फाइनेंशियल बिल को, तो कोई कानून नहीं बन सकता बिना दोनों हाउस के अप्रूवल के। आप ये कह रहे हैं कि विधान परिषद चाहे तो कोई कानून भी रोक सकती है? सर कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए? 14 दिन बाद शायद उसको रिटर्न करना होता है। इसको अपना पढ़िएगा ठीक से, हाँ? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है। दो, जो आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, जी सर। उसमें 2 ऐसे सेक्शन है जो मूल अधिकार पर प्रभावी होते हैं।
मतलब मूल अधिकार के उल्लंघन पर भी अगर उस प्रोविजन का सहारा लेकर कानून बनाया जाए तो कानून बनाया जा सकता है। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती उसको नहीं दी जा सकती। ऐसे कौन से दो प्रोविजन है वो? सर आर्टिकल 19। मैं बात कर रहा हूँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, आप बात कर रहे हो 19 की। 19 कहाँ था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में? सर एक एक कुछ सेकंड दीजिए सर। हाँ हाँ, सोचिए आराम से। अब 10 सेकंड लीजिए। सॉरी सर। 39 बी और 39 बी और सी पढ़िएगा इस क्लास के बाद। जी सर। आप जज बनना चाहते हैं, आपकी जज बनने के बाद पहले 1 साल में प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? आपको सिलेक्ट कर लिया गया, पीसीएस जो आप हो गए, आपकी 1 साल में प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? यस सर। सर पहले साल तो बेसिकली मैं काफ़ी कुछ चीज़ें सीखना चाहूँगा जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि मुझे जिससे मैं अनअवेयर हूँ। और तो आपकी प्राथमिकता सिर्फ 1 साल सीखना है। आपको तो हम ट्रेनिंग दे के भेजेंगे ना। आप जब सिलेक्ट होगे आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप जाओगे ना। जब आपने नौकरी ज्वाइन की, आपको जाते ही आपको कोर्ट अलॉट हो जाती है, उस कोर्ट के आप अकेले मालिक होते हो, ठीक है। जी तो जब आप कोर्ट के मालिक हो गए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? सिर्फ सीखना है, तो न्याय कैसे दोगे आप? सर, सीखते हुए न्याय देंगे। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो सीखेंगे, जो आती हैं उस पर न्याय देंगे। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं मुझसे? सॉरी सर, अभी नहीं याद आ रहा है सर। आलोक, मैं आपका फीडबैक देता हूँ। जो पहला सवाल था शौर्य का कि जज की 3 क्वालिटी क्या चाहिए, ईमानदारी, न्यूट्रलिटी, एम्पैथी बताया। उसमें आप बोला कि काफी कुछ हम सीखने की कोशिश करें। आपका ठीक सवाल था। हर आदमी ईमानदारी, न्यूट्रलिटी, एम्पैथी एक दिन में नहीं पाता है, उसे समय लगता है। कभी अपने को बहुत बोस्ट नहीं करने का इंटरव्यू में, हम्बलनेस एक होनी चाहिए, अपनी क्वालिटीज को बहुत नहीं बतानी चाहिए। अब फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल आपने नहीं पढ़ा है, बड़ी सरप्राइजिंग बात है। क्यों नहीं पढ़ा आपने उसको? सर पढ़ा आप हुआ था, भूल गए हैं सर। तो उससे क्या हुआ? एग्जाम। आप बोर्ड दूसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल पे मैंने 4 आर्टिकल पोस्ट किए हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते चैट? देखो, घोड़े को आप पानी पिलाने के लिए आप ले आ सकते हो तालाब तक, आप पानी थोड़ी पिला दोगे। अब हम आपको यहाँ बोलते हैं, आप क्लास 25 लोग रजिस्टर किए, 17 16 12 लोग क्लास करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो आप तो नहीं कर सकते कुछ उसमें। अब आपको रोज हम सर्च करके आर्टिकल पोस्ट कर, आप क्यों नहीं पढ़ते हो उसको? क्या प्रॉब्लम है उसको पढ़ने में? आप लोग नोट्स क्यों नहीं बनाते हो उसका? सर देखेंगे सर आज। देखो क्या है ना कि ये जीवन की रेस जो है बहुत ही तेज रफ्तार की रेस है। अगर आप अपने आप दौड़ना नहीं सीख रहे हो तो नहीं हो सकता इसमें। खुद दौड़ना सीखो ना। हमारे कहने के बाद अगर आप आ रहे हो एक्शन में तो फायदा नहीं हो रहा ना। आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप बोलते भी अच्छा हो, आपके चेहरे पे बहुत बहुत कहते हैं प्रेजेंटनेस है, बड़ा इनोसेंस है, आप बात बहुत अच्छे से करते हो। थोड़ा आप कई बार सवाल को ठीक से सुन नहीं पाते हो, तो आप सवाल को सुनने की कोशिश करना, बाकी ठीक है। सौर आप बोलो, सौर कुछ राय है आपके पास? सर, दो तीन चीजें कहना चाह रहे हैं सर। हम्म। एक तो ये है सर कि मैंने ऐसा देखा कि जिस क्वेश्चन में ये काउंटर क्वेश्चन के समय फंस जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आंसर में देर आर सपोज टू बी 4 पॉइंट्स और पहला दो ही बता दिए सर, तो जब बाकी का दो जिसमें ये नहीं श्योर है, जब उसको ये अटेम्प्ट करते हैं तो बोलते बोलते हंसने जैसा लगते हैं। तो वो खुद ही साबित कर देते हैं कि ही इज ब्लफिंग, ही इज गेसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये नहीं करना है आलोक, है ना? कि हाँ सर, ये जहाँ मैंने जहाँ भी जरा भी पकड़ा था। गड़बड़ा रहा है वहां वहां नहीं मुस्कुराना है, बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है। वहां जबरदस्ती का मुस्कुराना या हंसना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
आपने अनुज सर के एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, जब उन्होंने पूछा आपसे कि आपके जो है वो रुचिकर विषय कौन कौन से हैं, तो 3 हैं। 3 में से फिर उन्होंने आपको ये विकल्प दिया कि बताइए तीनों में से किस कोई एक बताइए। किसमें से नहीं पूछा, उन्होंने बोला तीनों में से कोई एक बताओ। तब आप नहीं कह सकते किसी में से भी पूछ लीजिए, नो, तब आप एक बताओ, तब यह आंसर एरोगेंट हो जाता है मेरी नजर में। ठीक है सर हाँ, इसको मैंने भी महसूस किया सर। है ना, आपको लग गया होगा तब जब वो स्पेसिफिक, और एरोगेंस वगैरह छोड़ो, ये क्वेश्चन का सही आंसर भी नहीं है। एरोगेंस को चलो जाने दो, एरोगेंट तो सब्जेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन तीनों में से आपसे मैं किससे पूछूं, उसका जब किसी एक किससे भी नहीं पूछूं, इन तीनों में से कोई एक बताइए, ये था सवाल जिससे आपसे सवाल पूछा जाए। तो फिर सर एक एक चीज कहना चाहूंगा सर, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, 1% बचा हुआ, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा फोन तो माफ कर दीजिएगा हाँ, नहीं प्लीज। ठीक है, तो फीडबैक तुम्हारा कल कर देंगे, टेंशन मत लो, लिख लिया है हमने, कल कर देंगे तुम अच्छे से। आलोक आलोक 2-3 चीज मैं आपको बोलूंगा जो आपकी पर्सनालिटी में फ्लॉ है। एक जी तो सर। एक तो आप जब आपके पास इंटरव्यू के समय सीरियसनेस की बड़ी कमी थी, आपका फोन आया आप उसको कंट्रोल नहीं किया। आप फुल्ली चार्ज मोबाइल लेके आप क्यों नहीं बैठे हो? किसकी सर जिम्मेदारी? चार्ज काफी था सर, देखते देखते उतर गया 3 घंटे से बैटरी जल्दी। तो आप उसको चार्जिंग में आपने क्यों नहीं आपने लगाया लगातार? देखो आलोक, क्या इसे बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से फैसला होता है इंटरव्यू का। बहुत छोटी 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 चीजें हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट भी करती है, आप कितने सिंसियर हो। सिंसियरिटी को मापने का यही सब है। हम लोग सुबह 9 बजे ऑफिस शुरू करते हैं, 9 बजे 12 घंटा हो गया है। ऑफिस का काम भी किया, आपके लिए पढ़ा भी, आपको किया भी, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सब चीजें देखिए, आप लोग इस तरह से देखने की कोशिश करिए कि जो आपके मेंटर हैं वो किस तरह की परिस्थितियों में है। देखिए आप लोग, हम लोग सुबह से सभी तक, अभी इस समय सिर्फ रह गए हैं 2 एस्पायरेंट, आप और हिमा, बाकी सबने छोड़ दिया। आपके देव में 2 घंटे बंद क्यों करता? आपके लोगों के पास इंड्योरेंस ही नहीं है, एक्सेप्ट यू और हेमा, सब ने छोड़ दिया। जी सर। अब इसका जिम्मेदार कौन हो बताया मेरे को आप? सर छोड़ने अब वाले। कहा ना, अगर आप देखिए, अब हम इस क्लास को कल न चलाएं, मेरे पास तो कोई बाध्यता नहीं ना। हम तो एक जी सर। सामाजिक संदर्भ है, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, आप लोग सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, आप लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं है। दूसरा, जो कोचिंग का जो व्यवसाय चलता है उसमें बहुत लोग मिसगाइड करते हैं, उन सबको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास ही नहीं इंटरेस्ट है तो मुद्दा ही सूस गवा चुस्त वाली हाल होगी। तो बेटा इस सब चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करो। आपका अपना मोबाइल चार्ज करो, हम आपको कल कल फीडबैक दे देंगे, ठीक है? जी सर। जी सर, थैंक यू हेमा, सर। आपके पास कोई सवाल है बेटा? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पहले ऑन करो कैमरा। ऑलवेज ऑलवेज एस्पायरेंट शुड ऑन द कैमरा, ऑलवेज। यस हाँ बेटा, हाँ, सर, बोलो। मैंने मतलब बीएससी किया था ग्रेजुएशन में, और उसके बाद एमएससी किया था, फिर एलएलबी किया है। हम्म तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपने फिर एलएलबी क्यों किया, तो उसका आंसर कैसे करना है? यही यही तो मैंने भी किया हुआ है, जो आपने किया हुआ है। हाँ, सर, तो वो लोग मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं देखो कहेंगे एकदम इधर कैसे आ गए आप? देखो, लॉ सबको करना चाहिए, लॉ सबको हाँ, जानना चाहिए, लॉ सबको करना है। लॉ सबको, मैंने 100 को कई बार बोला कि आप लॉ कर लो। लॉ हर आदमी को करना ही करना चाहिए। कानून जानना, कानून सीखना लाइफ का परम कर्तव्य है। तो आप बोलो कि सर मुझे लॉ में सीखना था, लॉ जानना था, इससे मैंने किया। हाँ और सर, बहुत बहुत से, इंटरेस्टिंग है। हाँ अब इसका देखो, अब आपके पास क्या, अब आ गया है आधार, अब आप इसको एक्सपेंड कर लोगे। जहां आप फंसे थे, आप पास वहां से आप आंसर पा गए हो। और साइंस भी पढ़ना चाहिए। सर मैं तो साइंस, हाँ। मैं तो साइंस पढ़ने का बहुत पक्षधर हूँ। साइंस से एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, एक एनालिसिस पावर होती है, समझ विकसित होती है। इसका मतलब नहीं कि आर्ट खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ। विज्ञान पढ़ना जरूरी है, लॉ पढ़ना तो बहुत, हर आदमी को लॉ पढ़ना ही चाहिए। बोला सर मेरी पहली शिक्षा थी, मैं लॉ करूंगी। सर्विस कितने लोग लॉ करते हैं? तो ये सवाल है, बड़ा अच्छा आंसर इसका। अभी बोला कि सर मेरी लॉ में रुचि भी थी, मैं साइंस पढ़, मेरा साइंस भी, मुझे सर साइंस अच्छा लगता था, लॉ भी अच्छा लगता था, तो मैंने सर साइंस चूज किया आर्ट्स की जगह पे, और लॉ मुझे सर करना ही करना था, तो मैंने लॉ किया, मेरी इंटरेस्ट। सर साइंस और लॉ मिलके डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों कॉम्बिनेशन जबरदस्त है ये।
जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखो क्या है ना कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विश्लेषण क्षमता। वो विज्ञान भी देता है और विधि भी देता है। ह्यूमैनिटीज में उतनी नहीं होती है, आई एम नॉट कंडेमिंग ह्यूमैनिटीज, लेकिन ह्यूमैनिटीज की जो एनालिसिस पावर है साइंस के एस्पायरेंट की तुलना में कम होती है। आप कभी आईआईटी वाईआईटी में जाकर देखो, वहां पे क्या है, लोग 12-14 घंटे काम ही, लोग बोलते हैं आईआईटी के लोग हर जगह सेलेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या है? वो 12-14 घंटे काम करने की आदत है। यहाँ जितने लॉ के एस्पायरेंट है 2 घंटे क्लास कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है। वो भावना लड़की इंजीनियर थी, वो हमको सौर की हालत खराब कर देती थी। जिस दिन हम लोग क्लास नहीं करते तो मैसेज करने लगती थी, सर क्लास नहीं किया, आज क्लास नहीं किया। कई बार क्लास उसके दबाव में किया गया, मानती ही नहीं थी वो। यहां देखिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी आप लोग लॉग इन करते हो, 25 लोग हो, 16-15 लॉग इन करते हो और धीरे धीरे हटने लगते हो। जब ये 2 घंटे के आसपास मेजॉरिटी लोग चले जाते हो, ये आपकी पर्सनालिटी का ट्रेड दिखा रहा है। इसको आप स्वीकार करो, आप मत स्वीकार करो। लास्ट में आलोक 2 ही आप रह गए। जिसने इंटरव्यू दिया उसको सुनना चाहिए इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं सुन रहा है वो। अच्छा, जितने सवाल इसमें हो रहे हैं, इसमें से कोई भी सवाल आपके इंटरव्यू में आ सकता है। जो आपसे पूछा गया आलोक में आ सकता है, आलोक पूछा गया आप में आ सकता है। तो आप सारे सवाल तो सुनो, उसको लिखो बैठ के सारे सवाल को। हम लोग सवाल का जवाब भी बता देते हैं, उसको आप लिखो ना उसको आप, तो आपका आंसर हो गया। और कोई सवाल? आप तो अपना सच बताइए, आप अपना सच बताइए कि क्यों एलएलबी किया एमएससी के बाद। सर मुझे बहुत मतलब पढ़ना ही ऐसा लगता है, पढ़ना चाहिए लॉ सबको, और बहुत बीएससी के बाद इंटरेस्टिंग क्यों लगा नहीं जब किया? पढ़ा। सबका छोड़िए, आपने बीएससी के बाद लॉ क्यों नहीं कर लिया, एमएससी क्यों किया फिर? सर वो बीएससी में ऐसा कहते थे वहां पर स्टूडेंट और टीचर थे कि एमएससी में नंबर नहीं आता जल्दी, नहीं समझ टेस्ट होता है ना वहाँ पे, एमएससी में एंट्रेंस होता है बीएससी के बाद। ओके, तो ऐसा तो वहां पे कहते थे कि उस पॉइंट पे आपका जो लॉ का इंटरेस्ट है वो कहाँ चला गया था? एलएलबी सर में क्यों उससे मुझे अवेयरनेस नहीं थी एकदम। अगर उससे मुझे अवेयरनेस होता तो मैं एमएससी नहीं करती, सीधे एलएलबी ही करती। ये आप बहुत अच्छा MSc आंसर है। आपने दबाव में दूसरे के कहने पे कर लिया एमएससी? हाँ, वहाँ पे बच्चे ऐसे थे ना जो सब बोलते थे, टीचर्स वगैरह, कि एमएससी काफी अच्छा होता है, मास्टर्स ऐसे करके बोला था। आपको, मुझे, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आपको ये बात ये बोलनी चाहिए कि जनरली जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, जिस परिवार से मैं आती हूँ, उसमें जो निर्णय होते हैं करियर और शिक्षा के बारे में, वो जो खुद बच्चा है या अभ्यर्थी है, वो सारा निर्णय सब पूरे सूचना और उसके आधार पर नहीं कर पाता है। एक कलेक्टिव जैसा डिसीजन होता है कि किसको किस तरफ जाना चाहिए। उस समय जो आकलन हो पाता है बच्चे की मेधा का, उसके हिसाब से करियर चूज हो जाता है। लेकिन कई बार यदि सौभाग्य हो तो लेटर इन द स्टेज इटसेल्फ, चाहे देर ही हो, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि हमारी सही रुचि किसमें है। और सर मैं इसकी तो भागीदार हूं, इसलिए इस चीज का विक्टिम जरूर हूं कि मुझे बहुत लेट हो गया, बट आई बिलीव दैट आई हैव रियलाइज्ड माय प्राइम लव फॉर द सब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई मैंने फिर लॉ में इनरोल किया सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने निर्णय पर कोई पश्चाताप नहीं है। मेरे कुछ आप ये देखो, इस तरह से सर क्या ना, ये ईमानदार आंसर ज्यादा अच्छा है कि हमने सर बीएससी किया, मुझे लॉ करना चाहिए था, मुझे एमएससी की मुझे इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन मैंने ये निर्णय ठीक किया। ये आपका अच्छा आंसर है, क्योंकि तो जो हकीकत होती है वो सबसे अच्छा आंसर होता है, जो यथार्थ होता है। यथार्थ यही है कि आपने बीएससी किया, फिर आपको उतना जागरूकता नहीं थी, सर मैंने एमएससी कर लिया फिर। नहीं सर, लॉ तो करना ही था मुझे। मैंने शायद मैं बीएससी के बाद लॉ करती तो भी ठीक होता सर, जो हो गया सो हो गया। और डेडली इन्फ्लुएंस में हो कॉम्बिनेशन गया वगैरह नहीं, ये सब मैं नहीं प्रमोट करूंगा, जी सर, जी सर। क्योंकि जो है आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है कि क्यों आप बहुत अच्छी जज बनेंगे। सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि ये एमएससी और लॉ क्यों किया, इसलिए नहीं कि डेडली कॉम्बिनेशन। तो आप सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि एमएससी के बाद पता चला कि लॉ भी करना चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि नहीं मैं डेडली कॉम्बिनेशन, दैट डजंट मेक सेंस। ये आप, हाँ ये मत करना, डेडली कॉम्बिनेशन मत करना, ये तो हमारे आपके समझ बात है, वहां नहीं मत सर, वो कहिएगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हाँ थी, समझ साइंस गया, और आई लॉ अंडरस्टैंड, मिक्स बट हो इट इज आवर ड्यूटी टू वार्न यू कि कहीं जी। रह न जाए। वहां देखो क्या ना, वहां पे हम्बलनेस एक तरह से आनी चाहिए। हम्बलनेस आपके शारीरिक भाषा से, आपकी बातचीत से, आपके एक्सप्रेशन से हमेशा आता है। तो हम्बलनेस एक पर्सनालिटी का ट्रेट है, वो इंटरव्यू बड़ा बड़ा मदद करता है। और कोई सवाल? तो सर तो एक आप एक ये था, मेरा भी आज इंटरव्यू था शेड्यूल में, ओके, हाँ, तो आज लेकिन आप, वही मेरा, हाँ मेरा ड्रेस तैयार नहीं था इसलिए। तो आप तैयार हो लो, कल कल अनुज 2 का कर लो, एक तो उनका हिमा का कर लो, एक और ले लो, ठीक है? तो कल 2 आदमी सर इंटरव्यू रखो।
सर मेरा थोड़ा सा लेट, आप 14 को कर दीजिए। 14। ठीक है, आप उनसे टाइम ले लो, जब कर तब ले लो, ठीक है। 14 आपका इंटरव्यू कब है? सर 17 को है। हाँ 17 को, ठीक है, ओके, ठीक ठीक, जो डेट करें Thank you. ठीक, Thank you. ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सर प्रणाम। प्रणाम सर।